Do I eat the same link? We'll start in a minute. Yeah. Hi everyone. So I hope पहले सेशन में समझ आया होगा. To be honest, I am not that happy with that, but yeah, ये सेशन में I'll be more happier because this is something I know I can deliver better. So yeah, I have a question for you guys. Like, do you know anything about AIDA? Like, there's a formula called AIDA. So if you know about it, just let me know what is it. कुछ भी पता हो तो. There's something called as a AIDA. AIDA. जैसा हमने पहले सेशन में सीखा कि यू हैव टू डिफाइन द टास्क फॉर द पीपल. रोल पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे जो जो इंसान आने वाले हैं उनका रोल क्या है, एंड देन यू डिसाइड द टास्क कि वो क्या टास्क करेंगे वेबसाइट पे आके. ओके, so these are two things which are very very important for you guys to understand: tasks and roles, right? Now once you have कि you know कि हम आपकी वेबसाइट पे आके these are the people, उनका ये रोल है और ये टास्क वो लोग करेंगे. उसके बाद you have to make sure कि वो जिस डायरेक्शन में आप उनको टास्क आप उन चाहते हो आप चाहते हो कि जिस डायरेक्शन में वो टास्क करे वो किस तरीके से करेंगे. दैट इज वेयर साइकोलॉजी इज इम्पोर्टेंट. एंड ऐसा कहा जाता है कि अवर ब्रेन, जो हमारा दिमाग है, एक सर्टेन पैटर्न में डिसीजन लेता है. वेयर कोई भी नई चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपके पेज पे सबसे पहले कोई आएगा, देन द फर्स्ट थिंग इज कि दे हैव टू पे एटलीस्ट अटेंशन. अगर वो आपको अटेंशन ही नहीं दे रहे, देन दे आर नॉट एबल टू डू इट. सो फर्स्ट इज अटेंशन. Then once they pay attention, उनको वो इंटरेस्टिंग लगना चाहिए इनफ कि वो आगे जाए, आगे देखे. इंटरेस्ट. Then it must create a desire, and once the desire is there created, उसके बाद then they will buy and then they will take action. मतलब कि जो भी आप एक्शन दिलवाना चाहते हैं, then they will take the action. Now these are the four things. एडा सिंपल सा चीज है, आप में से काफी लोगों को पता भी होगा. जो हम आज बात करने वाले डिटेल में शायद वो चीज का ज्यादा पता नहीं होगा. सो इफ यू थिंक अबाउट दैट, इन अ इंटरनेट वर्ल्ड, वेबसाइट पे आने वाले लोगों को आप चार कैटेगरीज में यू कैन कैटेगराइज देम. फर्स्ट इज ब्राउजर्स. ब्राउजर्स मतलब कि ऐसे लोग कि जो आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं बट उनको नहीं पता है कि उनको क्या चाहिए, उनको शायद वो नीड भी नहीं है आपका. फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा वीडियो हो एड्स में, या फिर जो भी ट्रैफिक सोर्स आपका है वहां पे उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, वहां पे उन्होंने पढ़ा, बट जब वो लैंडिंग पेज पे आए उनका कोई ऐसा नीड नहीं है जो आपके प्रोडक्ट से सॉल्व हो रहा है, उनको पता नहीं है उस चीज का. बट शायद वो नीड हो, मतलब दे आर नॉट अवेयर कि उनको ये प्रॉब्लम है, उनको चीज की जरूरत है. बट दैट इज योर टास्क कि मेक देम अवेयर कि हाँ ये लाइफ में आपका ये प्रॉब्लम है, तो दिस प्रोडक्ट कैन सॉल्व. सेकंड, इवैल्यूएटर्स. इवैल्यूएटर्स मतलब कि ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट के जैसे प्रोडक्ट को देख रहे हैं एंड दे आर कंपेयरिंग कि हाँ ये ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि you have some program like one of the people I work with, he has a program called Speak and Get Rich, which is targeted, जो ऐसे लोगों को टारगेट करता है who wants to be a trainer or coach in the future. Now if there are people जो who are looking for program like that, उनको ऐसा प्रोग्राम चाहिए, then you can say that's are evaluators. evaluators में एक चीज होती है कि they are not just looking कि प्रोग्राम की डिटेल्स क्या है, उनको ये भी चाहिए कि आपका प्रोग्राम लोगों से डिफरेंट कैसे है, बेहतर कैसे. तो सेकंड टाइप ऑफ पीपल हु आर लाइकली टू कम ऑन योर वेबसाइट और या फिर आपके लैंडिंग पेज, दैट आर इवैल्यूएटर्स. देन
थर्ड वन आर द ट्रांजैक्टर्स. ट्रांजैक्टर मतलब कि ऐसे लोग कि जिन्होंने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है, दे आर देयर, मतलब वो सिर्फ अपनी आपकी वेबसाइट पे इसीलिए है कि हु जस्ट वांट टू ट्रांजैक्ट, उनको अपना सिर्फ काम खत्म करना है. ये ऐसे लोग हो सकते हैं फॉर एग्जांपल कि पहले आपकी वेबसाइट पे आके गए थे, उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया था, पर फिर कुछ सोचा एंड दे डिसाइडेड कि हाँ अब तो करना ही है, और अगली बार लेट्स से कि आपका ऐड दिखा है, ईमेल दिखा, दे जस्ट क्लिक देन बॉट. और चौथे हैं उच्च विचार कस्टमर्स. So these are the 4 types of people who are likely to come on your website. तो ये चारों लोगों का आपको अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी. Now let's talk about हमने जो एडा की बात करी वही से शुरू करते हैं कि what are the things which are important. Let's talk about A for attention. What people pay attention to, it's very very important for you guys to understand. और just let me know कि आप अगर if you want कि लोग आपके वेबसाइट पे अटेंशन दे, so what you should do, आपको क्या करना चाहिए, and what are the things you have to make sure कि वो उसी चीज को अटेंशन दे रहे हैं, वो सर्टेन ऑडियंस ही अटेंशन दे रही है जिनको आप चाहते हैं. तो लेट मी नो व्हाट यू कैन डू. आपको क्या लगता है क्या क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से लोग अटेंशन दे. Just a minute, I think chat option is not open for everyone. I hope it's open now. Please check and let me know. Yes. Okay, so the question is, tell me कि किस तरीके से करते हैं, and just give me like a 4 to 5 website जो recently देखी हो, किसी की भी हो, and let's do that. कि is it good or bad in terms of attention? Let's do this. Let's do live. You know, we can do live demo or live something, live analysis basically. Is it good in terms of attention or not? So give an example of 4 to 5 websites. Just put one everyone. So अगर आप सभी लोग एक एक वेबसाइट का नाम भी डालोगे, we can get at least few websites जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं. वन प्लस वेबसाइट, इफ पॉसिबल गाइस प्लीज पुट द एग्जैक्ट लिंक जिसको क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सके. आई विल पुट द वन प्लस. ओके, okay, one plus, right? Let's go there. I'm sharing the screen, just give me a minute. And yeah, okay, that's a home page. Like, tell me, like, is it good, bad? What do you think? Yeah, I believe it's a very clean. For example, for the people जो ये लोग ऐसे हैं who are coming, who know they are on the OnePlus website, it's a very clean website. They have very focused thing. So I believe it's a very well done, especially if you are working with anybody जो ऐसे लोग हैं who have this kind of product. For example, technologies. You can see same with Apple. Just give me a minute. I have मैंने भी कुछ चीजों का लिस्ट बनाया था apple.com. So yeah, if you think Apple, वहां पे भी उन्होंने क्या करा है, it's not like if you go on a website you only paying attention to one thing. उनको जो आपको दिखाना है, that's the only thing you are seeing. Very clean website, very nicely done, and you know कि आपको करना क्या है. At least you are certain कि अगर आप let's say, and they have, अगर आप इसमें देखें Apple में भी and even on a OnePlus, both have very nicely done कि उन्होंने यहाँ पे ऊपर जो है उनका जो नेविगेशन है, that has almost everything you want.
एज अ पर्सन अगर आप वहां पे जा रहे हो OnePlus की वेबसाइट पे, तो वट एवर यू वॉन्ट इज देयर, so there is no confusion there. It's very nicely done. So in the same way, there are few other websites we can go. You guys can also put from different industries. कुछ और इंडस्ट्रीज का भी आप एग्जांपल शेयर कर सकते हैं. देयर आर अदर थिंग्स आई गॉट. ओके, boatlifestyle.com. या ओके. ओके, when it comes to navigation, I feel it's nicely done. Do you think it can be better in terms of like ऊपर जो navigation है, ये जो slides है which is like nicely done, but अगर आप ऊपर देखो, just a minute. Just a minute. Give me a minute. एक मिनट. boatlifestyle.com. I hope it's visible now. Yes. So if you think about the scroll and all, you can see they are mainly focused on two things: their watches and earbuds. Now I'll tell you one thing which is Apple is doing well compared to boAt, कि यहाँ पे अगर किसी इंसान का फोटो होता, I bet कि that can increase conversion. जितने भी लोग स्पेशली डिजाइन कर रहे हो, जितने भी आप में से लोग हैं who are into design, understand this one thing. This is a proven like over a million time. हर experiment में this is something you should always go with. Use people in advertising whenever you can. जहाँ पे भी लोगों का इस्तेमाल कर सको करो, because I'll share example. People pay attention. हमारा जो इंसानी दिमाग है, our brain is evolved to pay attention to people's eyes. We are like to see people's eyes. यहाँ पे कोई face नहीं है, which is the negative part of this website. एक और चीज which could be improved यहाँ पे, इसकी categories में इन लोगों ने रखा है, but the thing is कि they on, if you think about main categories, they have like a 3 or 4. Earbuds है, smart watches, I guess. I'm not able to see smart watches here. Just give me a minute. Okay, so they have some watch here, but ऊपर अभी नहीं है. So you can see they are also, I don't know why. If you guys can see the smartwatches section here, please let me know, because आगे की स्क्रीन में आगे की स्क्रीन के अंदर दिख रहा है, but यहाँ पे नहीं है. So what they could have done simply is कि they could have an option directly, जैसे कि आप Apple में देख सकते हैं कि they have very precisely defined. That's a Mac, that's an iPad, that's iPhone, and you can go precisely directly where you want to go. Instead, अगर मुझे इसमें जाना है, every time use this simple thing. Understand this. There is something, अगर हमारा human brain है, the thing about human brain is lazy, right? So every step you add, that reduces the conversion rate. हर extra step जो add होता है ना, वहां से conversion rate कम होता है. Just compare Apple versus boAt. Now think about it. अगर यहाँ पे आप हो, and let's say कि अगर मुझे कहीं पे जाना है, तो first मैं यहाँ पे आया, मुझे आना पड़ा. Then I have to click through earbuds. Then I have to go on earbuds. That's 2 clicks. 2 clicks हुए. Let's say कि they could have like instead उनके best seller रख सकते हैं. Instead अगर मुझे Apple पे जाना है, let's say I want to look for iPhone, let's say 14 plus. That's a 1 click. So just understand little things matters. और यहाँ पे तो इन लोगों ने पता नहीं, the biggest mistake I feel is कि उन्होंने अपना स्मार्ट वॉच का यहाँ पे कैटेगरी ही नहीं डाला है, या फिर मुझे नहीं दिख रहा है. I'm not sure. Okay, yeah. Okay, so I was missing it. So, but what they could have done, कि wire phone, earphones, there are like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. They have different earphones categorized that way, but instead एक simple category होता for earphones, उसके अंदर just like Apple. That would have worked a lot better in terms of human brain.
कि human brain can understand that easily. Yeah. So when it comes to attention, I guess both Apple and OnePlus both are doing very nice job compared to both. So this is something you guys need to understand कि जब भी आपके वेबसाइट पे पहला लैंड कर रहा है इंसान, पहली चीज वो देखेगा दैट्स अ हुक पॉइंट. दैट इज समथिंग कि वहां से वो एंकर है, तो वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए. आपको जो उनको दिखाना है वही दिखना चाहिए. पीपल शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि कहाँ पे जाए, क्या क्लिक करे. This is also confusing the this is going too fast. If you have any other websites, please let me know. We can go through it, especially in terms of training and training industry and all. Any educational courses or something jiske, yeah. Mind Valley. If you think about Mind Valley, let's go to their one of their courses. Right? Even we can go on landing pages. Yep. If you think about यहाँ पे, तो you can see the thing is कि यहाँ पे अगर आप आए हो तो there is only one thing. I won't recommend, अगर आप वो जो रख रहे हो मल्टीपल पेजेस यहाँ पे जो ऑटो स्क्रोल हो रहा है, मेक श्योर उसका टाइमिंग यू शुड बी वेरी अवेयर. बहुत जल्दी अगर स्क्रोल कर रहा है तो क्या हो रहा है, द थिंग इज कि अ पर्सन लाइक बिकम इंटरेस्टेड इन इट एंड देन स्टार्ट टू लूज इंटरेस्ट. यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इन्होंने क्या है, सिर्फ एक ही चीज आप यहाँ पे करने वाले हो एंड दैट इज ज्वाइन माइंड वैली. सो दिस इज नाइस. लेट्स गो टू वन ऑफ देयर कोर्सेज और समथिंग. कोर्सेज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास जो मेरी टीम वाले लोग हैं, दे माइट गेट सम आइडियाज कि हाउ दे शुड डू इट इज वेल. क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पे भी काफी गलतियां हो रही है. ओके, so that's a call. Let's see this program, Silva Ultra Mind System. So if you think about it, okay, Udemy, Masterclass and Bada Business, we'll take all three. So think about it. उन लोगों ने एक चीज यहाँ पे, ये शायद ऑटो है, ऑटो में ये आईपी एड्रेस को ट्रैक करके दिया, लाइक नाउ अवेलेबल इन इंडिया, द सिल्वा अल्ट्रा माइंड सिस्टम, अनलॉक द एक्सेस. एटलीस्ट दे आर डूइंग गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ कि उनको जो दिखाना है वही दिख रहा है, सिर्फ एक ही चीज पे हाईलाइट हो रहा है. कई बार क्या होता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ वेबसाइट्स जहाँ पे मल्टीपल चीजें एक दूसरे के साथ बंडल अप हो रही है और हमको पता नहीं कि अटेंशन कहाँ जाए. जस्ट पहली बार जब आप वेबसाइट ओपन करो ना, सी कि अगर आपकी आंख एक ही जगह पे जा रही है और आप आसपास वाले 5 लोगों से पूछो, उनकी जगह भी एक ही जगह पे जा रही है आंख, दैट इज गुड, नाइसली डन वेबसाइट, जहाँ पे यू नो कि वो बंदा आपको गाइड कर रहा है इनडायरेक्टली. सो लेट्स गो टू masterclass.com. Yeah, this is nicely done. Learn from the best, be the best. And नीचे directly they have the questionnaire. I mean, this is one of the best strategies you can use अगर आपके यहाँ पे cold audience बहुत ही ज्यादा आ रही है, where they have directly given the option. People feel कि they should feel out something and it's like continue. I bet this is a good way. This is an example of micro conversion. If you want to know the exact example कि micro conversion किस तरीके से कर सकते हैं. And they have not written कि भाई वो जो है ये, this is like a self labeling कि वो क्यों आए हैं, and nobody feels कि they should not do it. Like I bet on it, this is one of the examples of micro actions, and this also helps कि उससे होगा कि I bet कि चारों जो चीजें हैं, अगर they might be different pages leading to it. I'm not sure. Okay, every membership includes 30-day free. Okay, this is badly done. मतलब आगे का first step is good. आगे उन्होंने जो messup करा, the problem is कि let's say कि if I wrote that I come there to improve my professional and leadership skills, the problem happened was कि यहाँ पे leadership पर कुछ mention ही नहीं.
सो जस्ट इम्प्रूविंग द हेडलाइन कैन इम्प्रूव द कन्वर्जन रेट, बिकॉज यहाँ पे रिलेवेंसी चली गई, मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पे आया हूँ. और what they could have done simply कि यहाँ पे if you think about headlines, a lot of people think lot in terms of headlines कि how to improve the headline. Just think about it. अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि I can create a multiple pages, what I could have done is improve, ये जितने भी ऑप्शंस है take it and सारों को एक ही लाइन में लिख लो कि improve your professional leadership skills, be a better artist, musician or writer, become better chef, improve your style and learn everything you want to learn with this master class. Now that is not the most optimal approach, but अगर आपके पास option नहीं है कि you can have multiple pages set it up, तो at least you can mention it कि उस बंदे को लगना चाहिए कि उसने जो आंसर दिया. यहाँ पे तो कैसा हुआ कि you ask somebody for a in real life example, ये तो ऐसा हुआ कि आपने कहीं पे आप कहीं बाहर गए हो, आप किसी अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने गए हो और आपने किसी फ्रेंड को पूछा कि व्हाट यू वांट टू ऑर्डर, उसने बोला कि आई वांट टू ईट पनीर मसाला और आपने मंगवाया पनीर तंदूरी. आपने उससे पूछा ओपिनियन, बट आपने उसके ओपिनियन का कोई रिस्पेक्ट नहीं किया. सो दिस इज द एग्जैक्टली द फीलिंग पीपल विल गेट अगर आप इस तरीके से कुछ करते हो. तो अगर सिंपली अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है वेर यू वांट टू इम्प्रूव द कन्वर्जन, मेक श्योर कि जो स्टेप्स वो लोग ले रहे हैं वहां पे वो कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन रहे. बट अटेंशन, व्हेन कम टू अटेंशन, दिस इज अ गुड एग्जांपल. फर्स्ट वन, लेट्स गो टू Udemy, बड़ा बिजनेस एंड सक्सेस ज्ञान. Udemy, आई डिडंट लाइक द Udemy, मतलब उतना, क्योंकि दोनों नेविगेशन में मुझे अपना कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. they are like a lazy marketers who are just trying to pitch कि if you are new to Udemy just join the Udemy. यहाँ पे मुझे अपना कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. I am not able to see why should I join, reason for joining. there is no good compelling headline. यहाँ पे कोई compelling headline जो है which I am not able to see. so this is something you guys can think. This is not good, nicely done. Subscribe to the best of Udemy. I bet अगर आपके भी कोई ऐसी जेनेरिक वेबसाइट है तो like for example Udemy in a one sense is kind of similar to Live Gurukul which I am personally involved in. तो इसी वेबसाइट्स में अप्रोच क्या होना चाहिए कि you should know the data कि किस टाइप की पब्लिक आ रही है who are not signed in. So you should have that particular data and try to cater जो most possible audience है. For example अगर सबसे मुझे पता है कि सबसे ज्यादा लोग आ रहे हैं, they are coming for a certain subject. For example they want to learn about mindset or they want to learn about कि उनको मनी का mindset सीखना है, then I would put that in front and then ask people to join. और second जो होगा, second जो banner होगा वो थोड़ा more generic होगा, but I'll try to put better headline. This both headlines sucks. It's like 1 out of 10 headlines, both of them. Now let's go to Bindra, badabusiness.com. I never liked their website to be honest because पता नहीं क्यों. Entrepreneur Launchpad. Is it? What is? I mean, 7-star. Just a minute. मुझे कुछ. And directly they are promoting the recent event. You can see. Okay, billionaire. Okay, they are promoting the program. उसके बाद free program का उन्होंने promote किया है. Like it is good for the people because Vivek Bindra is a big enough brand कि वहां पे आने वाले लोग में इतना वॉल्यूम होगा कि they want to learn about entrepreneurship. But उनका भी next step entrepreneur launchpad. Okay, this is the best example I'll give you guys कि जहाँ पे your creative team can screw up your landing page. Now just imagine this. You clicked here. आप पहली बार उनके पेज पे आए हो. You clicked for the program कि you want to join कि आपको entrepreneur launchpad में join करना है. The problem is यहाँ पे इन सातों में से एक का भी फेस मेंशन नहीं है. Like विवेक ओबरॉय, रितेश अग्रवाल, रणवीर,
यहाँ पे किसी का भी फेस मेंशन नहीं है जहाँ पे जब आपने क्लिक किया था। नेक्स्ट पेज पे जब आए, द प्रॉब्लम इज कि जिस वर्ड को सुन के या फिर जिस प्रोग्राम के नाम से मैंने क्लिक किया था मुझे वही नहीं दिख रहा है। तो दैट इज द प्रॉब्लम, लाइक एटलीस्ट दिस शुड बी अपफ्रंट कि मुझे पता चले कि हाँ आई एम ऑन द पेज। मुझे यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतना देखो, आई फील कि मैं कहीं दूसरी जगह पे आ गया। सबकॉन्शियसली दैट कैन क्रिएट ट्रिगर। आई मीन दिस इज स्क्रूड अप इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट स्टेप। बट हाँ, अगर उनका गोल ऐसा है कि दे वांट उनका वॉल्यूम, बिकॉज डॉक्टर बिंद्रा जो वेबसाइट करते मतलब जिस लेवल पे है उनके पास इतना वॉल्यूम है कि दे कैन गेट अवे विद इट, उनको इनफ कस्टमर्स मिल जाएंगे। एंड आई पर्सनली फील कि अगर इफ आई कंसिडर दिस पेज, अगर उन सातों का फोटो यहाँ पे कहीं पे रखा होता, दिस वुड हैव कन्वर्टेड लॉट मोर। जस्ट बिकॉज फॉर एग्जाम्पल काफी लोग बिंद्रा डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पहली बार देख रहे हैं, बट दे नो रणवीर और दे नो रितेश अग्रवाल और दे नो डॉक्टर ओझा। शायद हो सकता है कि उनको देख के भी देर इज हायर चांस ऑफ कन्वर्जन, वो बंदा क्लिक करे। सो देर आर कपल ऑफ थिंग्स आई एम सीइंग कि उन्होंने उनमें से किसी का फोटो यूज नहीं किया है। एंड सेकेंड थिंग तो वो तो दैट्स अ नेक्स्ट पार्ट, बट या सो आई होप यू गेटिंग द आइडिया। सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उस लोगों को उन लोगों को फील करवाओ कि दैट इज रिलेवेंट फॉर देम। अगर उन लोगों को ऐसा लगे कि हाँ उनको रिलेवेंट है, दे आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन। आप जो चीज सबसे ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, यू वांट टू प्रमोट दैट। ओके, तो या उसके बाद लेट्स सी, unleash the best version for yourself. This is no doubt a bad example of attention. The problem is मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या करना है. There is no button here, but that's about a different topic. But हाँ, when it comes to attention, this is good one. Unleash the best version for yourself. यहाँ पे कुछ वेबसाइट बेहतर हो सकती थी, but yeah. So yeah, I hope you are getting the idea when it comes to attention. जब आप वेबसाइट पे जाओगे, पहली चीज जो कस्टमर देखेगा, यू हैव टू मेक श्योर कि वो पहली चीज ही उसको दिखे जो आप उनको दिखवाना चाहते हैं। तो आई होप यू गॉट द आइडिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पीपल नो कि उनको सबसे पहले अगर पीपल फील कि द थिंग इज रिलेवेंट टू देम, उनको वो चीज रिलेवेंट लगेगी, देन एंड देन दे विल पे अटेंशन। और अटेंशन के लिए 3 थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। इज उनको लगना चाहिए कि उनको पर्सनली कुछ हेल्प करेगा। यू नो दैट इज व्हाई दैट इज इम्पोर्टेंट। यू शुड नो कि हु इज योर टारगेट ऑडियंस, आपको कस्टमर्स कौन है, किसको का टारगेट कर रहे हो, एंड दैट शुड फील पर्सनल, दैट शुड फील रिलेवेंट। So these are the 2 important things which is important for you guys. And the third thing is कि anticipated। अगर आपका कस्टमर, लेट्स से कि हमने देखा डॉक्टर बिंद्रा का पेज देखा, इफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग टू हियर फ्रॉम बिंद्रा, दे विल पे अटेंशन, वो तो करेंगे। बट बाकी जो 2 चीजें हैं वो वहां पे मिसिंग थी, कहीं ना कहीं वो रिलेवेंसी मिसिंग थी सेकंड पेज पे। तो एंड पर्सनल वो लगा नहीं कि दैट इज समथिंग फॉर मी। अगर वो बिजनेस वाला बंदा है, फर्स्ट पेज पे लगा कि दैट इज एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, बट सेकंड पेज पे अगर उन सातों में से किसी को नहीं जानता है बंदा, तो ही विल बी लॉस्ट। So I hope you got the idea कि you have to design your first page या फिर first part of the page in a way कि लोगों को feel आए कि that is something very personal. Now I want to go through some bad example अगर मुझे याद आए तो। Can you guys tell me about any website जो आसपास दिखती है which are not very well known name, मतलब बहुत बड़ा नाम नहीं हो but you see their website, but जिनके हो सकता है 1000-5000 फॉलोअर्स हो, ऐसा कोई नाम दिमाग में आ रहा हो तो प्लीज शेयर, because they are more likely to have a bad website. वेबसाइट के बारे में
किसी को अगर वेबसाइट पता हो तो प्लीज शेयर, जो ज्यादा उतना वेल नोन नेम ना हो, मुझे अभी कोई याद नहीं आ रहा है। और लेट मी गो टू माय फेसबुक, अगर वहां पे अभी कोई ऐड आ रही हो तो वी कैन गो चेक। कैन यू गाइस शेयर माय वेबसाइट? आई हैव टू लॉग इन, just give me a minute, or you guys can also share, you can go on your Facebook, just check any random ad and see. अगर I'll tell you one exercise you guys can do, try to do daily. अगर टाइम पास भी कर रहे हो ना फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, this is what I do usually. मेरे आसपास लोगों को लगता है कि I'm doing time pass, but sometimes this is what I do, कि whenever like I'm going on a page, I see ads, I try to break down, is it good, bad, क्या अच्छा है क्या बुरा है. Even I go on landing pages, I see कि ads पे जो expectation उन्होंने build करी, is it fulfilling on the landing page or not. So that is something you guys can do. Check out everybody's landing page. होगा क्या, especially people who are doing agency work. Guys, कई बार क्या होगा, you want to do research. The biggest thing is, if you let's say कि you are spending 30 minutes, 30 मिनट अगर आप daily time spend कर रहे हो landing अपने client acquisition को prospect find करने के लिए. Now the thing is कि अगर आपको उनका ad दिख रहा है और आप you are breaking down कि उनके में क्या गलती है क्या अच्छा है, तो उससे होगा क्या, द बेस्ट पार्ट इज कि आप उन लोगों को भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो आपके प्रोस्पेक्ट लिस्ट में बढ़ेंगे, स्पेशली इफ यू आर एजेंसी और इफ यू वांट एज अ फ्रीलांस, अगर आपको क्लाइंट चाहिए तो सिंपली यही करो, जब भी इंस्टाग्राम पे हो यू कैन मेक अ रूल, यू कैन यूज इंस्टाग्राम, पर हर 30 मिनट यूज के लिए आपको 5 प्रोस्पेक्ट के नाम अपनी गूगल शीट में डालने पड़ेंगे. मतलब कि अगर आप 30 मिनट तक यूज करते हो, दैट इज बेसिकली अ गेम फॉर यू. अगर पांच बेसिकली अगर आपने 5 लोगों के नाम अपनी सीट में गूगल शीट में डाल दिए, देन यू कैन यूज इंस्टाग्राम फॉर 30 मिनट्स अगेन. तो इट्स अ गेम फॉर यू. तो दोनों आपका क्लाइंटेज का एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी बढ़ेगा एंड इट विल हेल्प यू. आई गॉट अ फ्यू गुड सजेशन, mindevolution.com. देन देयर इज अ लाइफ व्हील. आई एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम लाइफ व्हील बिकॉज वो बंदा जो है इज अ हार्डकोर कॉपीराइटर. तो विल सी, होता है कई बार. Now you know why this is a bad website. जैसे ही आप वेबसाइट पे गए, you got an pop-up form and आपको पता ही नहीं है कि क्यों मुझे फॉर्म भरना चाहिए, तो that's a bad one. Then you see this is like moving too fast. Okay, मतलब क्या है, मतलब is it, this is not even clickable. करूँ क्या मैं, अगर पहली बार कोई बंदा आया, what he has to do, and there's no way I can pay attention to any of this. Like look, सक्सेस फर्स्ट स्टार्ट विथ द माइंड. ओके, हाँ, तो गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड. हाँ, बट व्हाट देन व्हाट, लाइक आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लैरिटी हियर, राइट? So this is a bad, in terms of attention, this is a bad website. Let me do this. I am keeping all the websites जो आप लोगों ने शेयर करी है. Now we got around 7-8. So सारी वेबसाइट को चारों 30 में चेक करते हैं, एडा के चारों फॉर्मूला में. नाउ नेक्स्ट वन इज स्किल ऑप्टिमाइजर. टेल मी गाइस, इज इट बैड, गुड इन टर्म्स ऑफ अटेंशन? पहली नजर कहाँ पे जा रही है? लाइक द नंबर वन प्रॉब्लम आई पर्टिकुलरली सी, उस बंदे ने सबसे पहले मेरी नजर जा रही है यूट्यूब ग्रोथ किट पे, राइट? आई गेस आप सब की. ओके, मॉकअप पे तो जाएगी, हाँ, आंखें बड़ ऊपर भी जा रही है. यूट्यूब ग्रोथ किट 50% ऑफ. नाउ द प्रॉब्लम है कि बंदे ने 50% की जगह 80% ऑफ दिया. यहाँ पे ऊपर लिखा है 50% ऑफ, यहाँ पे उसने लिखा है रेगुलर प्राइस इज 499 और गेट एवरीथिंग फॉर 99. सो ही गिव 80% ऑफ और ऊपर लिखा है 50% ऑफ. मुझे नहीं समझ आया क्या है. ओके, यहाँ पे ओके. सो आई बिलीव यूजुअली क्या होगा, सबसे पहली आंख जाएगी मॉकअप पे, सेकंड यहाँ पे, फिर यहाँ पे. बट द प्रॉब्लम इज कि ये सारा जो ग्राफिक्स उन्होंने इस तरह से डिजाइन किया है, द प्रॉब्लम इज कि लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकिंग अटेंशन. different type of people will pay attention to different things, because just think about this, somebody who is very visual, just like Rahul,
यू गाइज पे अटेंशन टू मॉकअप, मुझे पैसे से मुझे पैसा दिखता है, मतलब मुझे 50% ऑफ पहले दिखा. So this is a bad website and this is where graphics screw up everything. कि यहाँ पे इन्होंने इतना सारा लिखा है कि वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर जर्नी, ये सारी प्रॉब्लम इज कि इन्होंने यहाँ पे भी इसको भी हाईलाइट किया, इसको भी हाईलाइट किया. There is no way there's one thing is being highlighted. So this is a badly done in terms of website. Okay, let's go to skill optimizer. नहीं वही है sorry. Let me go to another one. Nutrix. I don't know कहाँ से ये क्या है, but let's see. Okay, so if you think about first, if you have noticed, usually जहाँ पे फेस होता है आंखें पहले वहां पे जाएगी. स्पेशली इफ यू आर लाइक इवन मेल और फीमेल, अगर फीमेल है तो फीमेल पे पहली नजर जाएगी. बोथ जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, बोथ पे अटेंशन. दैट्स अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी की रिसर्च उस पे हो चुकी है. अगर यहाँ पे फीमेल की फोटो के साथ अगर किसी बच्चे की फोटो होती तो बच्चों पे आंखें पहले जाती है, इवन मोर देन फीमेल्स. बट या, so this website is not that greatly done. 5 सेकंड में ये चीज घूम रही है and I am not sure what I should do. Yeah, it's not nicely done. Beauty BFF that keeps your skin glowing. Okay, they are promoting their 1999 4 वाला 90% यूजर्स ब्राइट स्किन. मैं पढ़ू उससे पहले ही चला जा रहा है ये. तो दे शुड लाइक इफ यू मेक श्योर कि जब भी ऐसा कुछ, मतलब इफ यू पुटिंग स्क्रोल वाला थिंग, ओके, स्क्रोल बार मतलब उसका आई थिंक आई डोंट नो व्हाट दिस मींस सेड, बट बेसिकली जहाँ पे इमेज मूव करती है, मेक श्योर कि गिव इनफ टाइम. लेट्स से कि इसमें काफी टेक्स्ट है, सो दे नीड मी, यू नो, आई नीड टाइम. एंड स्पेशली इफ यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, 90% और 30% बोथ आर टेकिंग अटेंशन. मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या है. इट्स फील्स लाइक यहाँ पे इन्होंने ऑफ लिखा है 90%, बोथ फील्स लाइक अ सिमिलर थिंग अगर इन फर्स्ट है, और पूरा पढ़ू उससे पहले ये चला जा रहा है. So this is something, this is a badly done website. So I hope you guys have understood कि क्या है. जब भी किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर आपने एप्पल का देखा होगा ना, यू नो कि what they want you to pay attention on and you are just paying attention to that. तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सबसे पहले what kind of content या फिर what kind of product, कौन से फोटो या फिर कौन से मॉकअप या फिर कहाँ पे you want them to pay attention. A minute. Okay, so I hope you guys get the idea so far. कि जहाँ पे बेसिकली ट्राई टू डू दिस, दिन की 5 वेबसाइट पे जाओ, चेक करो, आपको अच्छे आइडियाज भी मिलेंगे. जस्ट लाइक ए मास्टर क्लास, वो आइडिया एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था, इट जस्ट केम आउट ऑफ रैंडम. वो दिखा तो अच्छा था. मास्टर क्लास वालों ने जो अच्छा चीज करी थी, दैट वाज उन्होंने जो स्टार्टिंग में 4 ऑप्शन दिए थे, दैट पुट्स अ लिटिल माइक्रो कन्वर्जन एंड दैट विल बूस्ट सेल्स, दैट विल बूस्ट द कन्वर्जन प्रोसेस. नाउ सेकंड पार्ट इज the 3 things that you need to, you know, make sure के whenever you think about attention, 3 चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा. is focus. First of all, focus. You design your web page in a focused way कि वहां पे एक ही जगह पे attention जा रही. unnecessary choices को eliminate करो. choices unnecessary जो choices है उसको ट्राई करो कि आप एलिमिनेट कर रहे हो. लोगों को थिंक अबाउट दिस, 95% people will leave web page from in first 2 seconds. okay, तो अगर उन्होंने पहली नजर में उनको वो हुक नहीं हुआ, they are not going to read on. तो अटेंशन के लिए सिंपल चीज है कि उनको फील आना चाहिए कि दिस इज फॉर देम. तो ट्राई करो कि जितना हो सके उतना लिख पाओ. क्लटर जितना कम कर सको वो करो, लेस क्लटर एंड बी प्रिसाइज इन टर्म्स ऑफ, अगर आप हेडलाइन लिख रहे हो तो प्रिसाइज.
In a world of internet, more than 7 words are bad. मतलब 7 से ज्यादा words लिखोगे, lower is better. Like if you have any product and you can write like a word like sex, people will stop at least. So make sure जितने कम words में you can provoke the emotions, that is better. Even photos can be used to provoke emotion, but make sure कि वो ऐसा हो जो आप अपने आगे की प्रोसेस में उसको रिलेट करवा पाओ. So I hope you get the idea. अगर यहाँ तक कोई भी confusion हो, so please ask, or else we'll continue the next thing, which is interest. So if you have a question, you can ask. Yes. Is it a question? ये एड़ा का प्रॉब्लम क्या है पता है? अटेंशन वेरी गेट आउट. Okay, no questions. So let's go to the next thing. Interest. What makes people interested in your thing? अगर let's say कि आपने उनका attention ले लिया, once you get their attention, then आपको देखना है कि why they should keep paying attention, why they should be interested in your product. तो उसमें 3 चीजें which are important. कि first you have to understand कि कौन है वो लोग जिन्होंने उस चीज को attention दिया. Okay, आपकी वेबसाइट पे अगर आपने फॉर लेट्स से कुछ भी लिखा हो, लेट्स गो टू द वेबसाइट जो हमने अभी खोली थी, कि लेट्स से कि अगर आपने फोन का फोटो रखा है, लेट्स जस्ट लाइक एप्पल में वहां पे, एंड पीपल पे अटेंशन टू दैट, तो यू नो कि उस बंदे को फोन चाहिए कहीं ना कहीं, एंड ही माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फोन, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो उसी तरीके से आपने जो भी हेडलाइन लिखी है या फिर आपका जो हुक था जिसकी वजह से अटेंशन मिला, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, कि व्हाट द विजिटर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, हु इज द विजिटर, उसका अंदाजा होना चाहिए. व्हाट योर विजिटर इज ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, इज विजिटर व्हाट ही इज ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो क्या करना चाहता है. एंड थर्ड थिंग इज इंपॉर्टेंट, clearly present things in a way. So these are 3 things कि सबसे पहले समझो कि कौन है विजिटर, व्हाट वो करना क्या चाहता है, एंड उस जो करना चाहता है वो इजीली क्या वो कर सकता है कि नहीं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक वेबसाइट जो थी हमने रह गई थी, बट 1 2 3 4. Okay, so let me share the screen again. Let's see everything from a point of view of interest now. Attention ka to I hope you get the clear idea. Now इसमें तो attention भी नहीं था, but let's say even if I paid attention, let's say कि मैंने अपने आप को force करके यहाँ पे attention pay करा होता तो भी पता नहीं क्या हो रहा है इसमें. Yeah, so get in touch with mind evolution. This is a bad, never do this. Like
व्हाट इज फॉर द इन इट फॉर द कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है, ये तो दिस इज बैड. लाइक एटलीस्ट दे कैन मेंशन कि दे कैन गेट समथिंग फॉर फ्री और समथिंग लाइक दैट, वो भी वर्क करता रादर देन राइटिंग दिस. लेट्स से कि यहाँ पे मैंने अटेंशन पे किया भी होता तो लाइक लेट्स से अगर मैंने अटेंशन पे किया भी होता तो भी मैं क्या करता, लाइक देयर इज नथिंग इंटरेस्टिंग टू मी नाउ, and this is something called like don't like there is nothing for me right now. इन्होंने अपने प्रोग्राम्स के बारे में भी लिखा है, लेट्स से आई एम इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, मैं क्लिक करके कहाँ जाऊँ, यहाँ पे ऊपर है, लेट्स गो, लेट्स सी कि आई एम अ कस्टमर जो एनएलपी में इंटरेस्टेड है. ओके, द प्रॉब्लम इज दिस इज अ वेरी वेरी बैड वेबसाइट है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है क्या करना है. द बेस्ट थिंग दे कुड हैव डन कि 4 कोर्सेज होते तो दे कुड हैव मेंशन्ड अबाउट द कोर्स, अगर उनको पता है कि उनका ऑडियंस सिर्फ डायरेक्टली उनके कोर्सेज के बारे में जानने आ रहा है तो पहली स्लाइड में रखते, there is a higher chance कि people would have paid attention. Second thing, NLP in the real world, there is nothing interesting. Intense workshop at my okay, foundation course that can help you. Inquire now. This is a badly done. यहाँ पे भी कुछ नहीं समझ आ रहा है मुझे. Name, number and course कौन सा करना है. Okay. Done. About the coach. Now the problem, एक और प्रॉब्लम जो मुझे दिखी कि यहाँ पे नीचे लिखा है अबाउट द कोच, कोच का फोटो नहीं है, विच इज बैड. और द थिंग इज कि पहले पेज पे कोच का फोटो है जहाँ पे अबाउट द कोच नहीं है. दिस इज अ प्रॉब्लम. लाइक लुक, अब मुझे नहीं पता कि इज इट अ स्टॉक इमेज और इज इट अ फोटो ऑफ द ट्रेनर. लाइक इट्स वेरी 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 बैडली डन वेबसाइट. So that is something, yeah. तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, पर अगर मैं इस यहाँ पे अगर कभी पहुंचा ही नहीं तो आई डोंट नो दैट शी इज द ट्रेनर, देयर इज नो कनेक्शन. तो एटलीस्ट प्रोग्राम के पेजेस पे अगर होता तो दैट वुड बी बेटर, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जनरेट हो सकता. आई विल टेल यू स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पब्लिक फील्ड जहाँ पे लोगों को दिख रहा है फेस, यू नो, पर्सनल ब्रांड काइंड ऑफ थिंग. इफ यू आर अ फीमेल और इफ यू आर वर्किंग विद अ फीमेल, just put your face and you will get some guy clients. मतलब कुछ भी नहीं सिखा रहे हो, दुनिया की बकवास से बकवास चीजें भी सिखा रहे हो ना. इफ जस्ट पुट योर फेस देयर, कोई फीमेल का अगर फेस है, देयर आर सम गाइज हु विल पे यू. मतलब सो एटलीस्ट मेक श्योर कि वो सिस्टम में, अगर ये जो भी कोच है अगर उनका सिर्फ फोटो भी रख दो, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करोगे ना, देयर इज अ चांस कि 100 में से एक बंदा सिर्फ इसलिए पे करेगा to just get in touch with this person. So this is something that you guys need to understand कि ये चीज आप समझ सकते हो. Now let's go to OnePlus. Let's say कि अगर मेरा यहाँ पे let's say कि get my attention and I clicked where I am going. Okay, so ये फोन था. Let me check. Okay, तो similar फोन है, दोनों चीजों यहाँ पे अगर मैं ये देख के आया हूँ तो I'll be like yeah, this is same. रिलेवेंसी, इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे हम लोगों ने नाम नहीं मेंशन किया था, बट ओके नो 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 राइट. ओके, वहां पे यहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम का नाम, प्रोडक्ट का नाम मेंशन नहीं था, बट एटलीस्ट आई कैन सी द सेम फुटेज, सेम फोटो. सो दैट इज ब्रिंगिंग ट्रस्ट कि यस आई एम ऑन अ सेम पेज, मुझे जहाँ पे जाना था मैं वहीं पे हूँ. ओके, सो दिस इज समथिंग यू गाइस कैन डू. थिंक अबाउट. नाउ आई नीड इंफॉर्मेशन. ओके, OnePlus ये इतने का है. नाइस. ओके ओके, this is a decently done website, not bad, not great to be honest, because यहाँ पे काफी और चीजें improvise हो सकती थी, which we'll talk next, but this is a betterly done than this one at least. Now let's say this is like going too fast. Boat में this is a problem. Let's say still I'm going there. Okay, give me a minute. Let's say कि okay,
नाउ इफ यू सी द प्रॉब्लम हियर, अगर आपने देखा कि जस्ट सी दिस, व्हाट हैपेंड वाज, यहाँ पे ये बिल्डिंग है, द कलर थीम, जस्ट सी द थीम एंड एवरीथिंग, कलर्स एंड एवरीथिंग, ओके। नाउ इफ आई क्लिक, मैं यहाँ पे क्लिक करके आया हूँ नेक्स्ट पेज पे, नाउ द प्रॉब्लम इज कलर थीम चेंज हो गई और जो फोटो था दैट चेंज, आई फील लाइक दैट्स अ डिफरेंट पेज। नाउ लॉट ऑफ पीपल से कि अभी तो मैं शांति से देख रहा हूँ तो मुझे सेकंड वाला ये दिखेगा। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मोस्ट पीपल वोंट गो दैट, ज्यादातर लोग वहां पे जाएंगे भी नहीं, दे विल लूज इंटरेस्ट, दे विल फील कि वो कहीं गलत जगह पे आ गए, दे माइट बैक आउट। So this is something you have to understand कि when you are trying to build interest, the thing should be relevant throughout the thing. लोगों को लगना चाहिए कि they are taking right action। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि I am not taking the right action, शायद मैं गलती से किसी और पेज पे आ गया। So this is you can do something with the color combinations as well. अगर background में color combination भी similar है, that is bringing trust. It could be any color, but just make sure कि वो consistent हो। So I hope you got the idea so far. Both interest, they are doing like a decent job. यहाँ पे तो मेरा interest नहीं था, but let's still go to the next page. A minute. What happens if I click up there? Okay, यहाँ पे there is no place I can click. मतलब they are saying कि course start कर लो, but कहाँ जाके start करो? Okay, there is no way. As a like they have, if you see, they have two different target audience they are targeting. एक है person, let's say learn more. Now they are starting subscription. यहाँ पे पहले में प्राइस का भी कुछ मेंशन नहीं था, and I'm not getting the idea because look, यहाँ पे they have mentioned something that courses start at 449, get your students offer, okay, subscribe to the best Udemy, okay। Now अगर आप देखो यहाँ पे मैं गया starting from at 750 per month. Now think about that, what can do, मुझे नहीं पता, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, but this is my first impulse। वहां पे था 449, यहाँ पे 750, मुझे नहीं समझ आया कि किसका 449 था और किसका 750, but at least that is screwing my brain and that creating fear। Like I'll tell you, when it comes to fear, अगर आपने 449 मेंशन किया है and on your landing page, checkout page, if you mention this कि instead of let's say 449 की जगह आपने 450 रुपीज भी लिखा है, आई बेट ऑन इट का, आई बेट आई कैन गिव यू गारंटी कि आपका कन्वर्जन रेट एटलीस्ट 10% कम हो जाएगा सिर्फ एक चीज से। अगर आपने देखा हो, देयर आर सम पीपल कि जो पहले इनिशियली दे हैव नॉट, दे डोंट मेंशन द जीएसटी प्राइस, दे जस्ट मेंशन द प्राइस और चेकआउट पेज पे जीएसटी ऐड होके दिखता है। नाउ इमेजिन दिस, लेट्स से कि किसी का कोई, मैंने देखा था, आई गेस किसका था, there's a guy, I forgot the name of the guy, basically it's a trainer, उसका 499 उसका दिखा, प्लस दे हैव 18% जीएसटी। उन्होंने मुझे थ्रू आउट पिच किया था 499 से, दैट वाज एंकर, और लास्ट में जो प्राइस आया था दैट वाज लाइक 572, दैट्स 18 सॉरी 590 which included the GST। Now the biggest problem is कि that create fear, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 500 रुपए पे करने हैं, एट लास्ट they are asking for more money, so that creates fear। So you have to make sure कि consistent रहो, initially बता दो कि exactly क्या होगा, अगर लास्ट में कम होता है तो there is a higher chance, yes। So if you guys can test it, I mean I don't care कि दुनिया में कौन कर रहा है, if even if they are at growth school or even they are the biggest company in the world, अगर वो चीजें, कुछ चीजों को फंडामेंटली गलत कर रहे हैं तो they are losing money at that place as well। So this is something you guys need to understand कि GST मतलब that is something के even in your pages, जैसे यहाँ पे हमने देखा, मुझे नहीं समझ आया, एक चीज है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का 750 है और कोर्सेज का 499 है, बट आई एम नॉट गेटिंग द क्लियर आइडिया। सो मेक श्योर कि आपका डिजाइन, आपका कॉपी जो बहुत ही स्मूथली जाए। आपको द प्रॉब्लम हैपेंस विद दिस पीपल इज, उनको पता ही नहीं है कि कौन आ रहा है वेबसाइट पे और वो क्या एक्शंस लेगा, वो किस रोल के लिए आ रहा है। सो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। तो अगर आप सिंपली दो चीजें समझ लो कि क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रोल है और क्या प्रोसेस होगा,
then you are able to optimize it. Without understanding it, you will not able to optimize. Let's go to Dr. Bindra's site. Now let's say यहाँ पे इंटरेस्ट आया, अटेंशन आया था, इंटरेस्ट मेरा यहीं पे लूज हो गया बिकॉज मुझे दिखा ही नहीं एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड, वो नाम ही नहीं दिखा. मेक श्योर एक चीज रखो, दिस इज अ रूल ऑफ थंब इफ यू वांट टू फॉलो. आंखें बंद करके अगर किसी एक चीज को फॉलो करना है ना, तो जस्ट मेक श्योर कि हैव वन थिंग कंसिस्टेंट थ्रू आउट योर वेबसाइट. इट कुड बी अ लोगो, इट कुड बी एनीथिंग, बट लेट्स से कि आपका लेट्स से यू हैव 5 स्टेप प्रोसेस फॉर योर लैंडिंग पेज. मेक श्योर एटलीस्ट वन थिंग विच इज लाइक थ्रू आउट पांचों पेज में सिमिलर है इन अबाउट द फोल्ड. मतलब के जो पहला स्क्रीन है वहां पे पांचों में एक चीज सिमिलर दिखनी चाहिए. लाइक दिस पेज हैज डन व्हेन कम टू गुड, डॉक्टर बिंद्रा दिख रहा है. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे मुझे प्रोग्राम का नाम ही नहीं दिख रहा है. एंड आई कैन बेट ये किसी डिजाइनर हु इज वेरी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी के चक्कर में उस बंदे ने बिंद्रा जी का करोड़ों का नुकसान करवा दिया. सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. सिर्फ ये मेंशन अगर ये ऊपर ले लेता है तो दैट इंक्रीजेस द माय इंटरेस्ट इज वेल, कि मैं देन आई विल कीप गोइंग. काफी लोग यहाँ पे आई कैन बेट अगर इनका एनालिटिक्स अगर आप देखो तो दे आर लूजिंग मनी एट दैट प्लेस इज वेल. फिर लेट्स सी बिंद्रा जी का वीडियो, मेगा इवेंट. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग इनफ. अगर मुझे इंटरेस्ट है, ही इज अ बिग नेम, देयर आर लॉट ऑफ बिग नेम्स आर कमिंग, सो इंटरेस्ट पार्ट इज गुड. बट वेयर आई एम लूजिंग इट, यहाँ पे जो पैसा उनका लॉस हो रहा है, विच इज राइट हियर. सक्सेस ज्ञान, अटेंशन. लेट्स से कि यहाँ पे अटेंशन मेरा तो रहता भी नहीं इस हेडलाइन से, बट लेट्स से रह भी जाता, देन व्हाट. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे पता ही नहीं है कि क्या प्रमोट हो रहा है. ये वीडियो देखने के बाद मुझे सिर्फ उनके बारे में पता चलेगा, विच इज आई सिंड्रोम. बेसिकली दे वांट टू शो कि हाँ हम ये है, बट मुझे मैं क्या करूँ उस चीज का. So they don't have any concrete thing where they are moving people. और इवन यहाँ पे जो देखो तो दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट, देयर इज नथिंग फॉर अ पर्सन टू डू इफ यू थिंक अबाउट देयर ऑडियंस. जो कस्टमर्स है उनके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं. Okay, so I hope you got the idea. Yeah, there are a couple of sites left. If you see, attention तो इसमें इतना नहीं था. When come to interest, that's a decent, मतलब इस बंदे की ये कॉपी यहाँ तक खत्म हो चुकी है. But yes, it's a good enough headline to convert. So as price level is low, so there's a good chance कि ये convert होंगे. Let's see next page पे क्या होता है. All in one blue, yeah, he's doing good job. He's maintaining the relevancy there. तो वो एक अच्छा काम इस बंदे ने किया है. Now you know everything, कि कितना प्राइस पे करना है and everything. It's a nice enough process. यहाँ पे let's say I click here, what happens? Okay. यहाँ पे भी उन्होंने वही गलती करी है जो, अगर if you see, just imagine this. You came here because you saw Shilpa Shetty holding something in her hand. The next page is the problem with the next page is you are not seeing the Shilpa Shetty on the first page. Like you are selling the product, but I don't care about the product. If you are using Shilpa Shetty on the first page, then use it here is also, because people are, जो लोग आ रहे हैं वो इसीलिए आए, because lot of people are coming because they saw Shilpa Shetty there and that brought the trust. अभी यहाँ पे उन्होंने तीसरे नंबर पे रखा है, which is they are losing money there. So I hope you are getting the idea what I want to say. First you get the attention, and next step, whenever you try to create the bridge between attention and interest, and you are trying to make them more interested in your product, make sure करो कि जिस process से वो बंदा आया वो वहाँ पे उसको कहीं पे fear trigger ना हो जाए. If he feels uncertain or fear, person, you will lose that person and you might never get that person back. हो सकता है कि एक बार वो बंदा आया था, ऑलमोस्ट वो रेडी था बाय करने के लिए, he had the money, he had the resources, सब कुछ था उसके पास, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से he lost that person. And let's talk about this, जिसके पहले मैं बात करना रह गया था. Now the home page is not
flawless one. Headline is not that optimal. I mean, it can get better for sure. Okay, even testimonials are good use यहाँ पे. Headline could be better, and if I were them, I might have used the longer testimonials with the whole face. मतलब इतने में मुझे दिख नहीं रहा है. When you have multiple faces, your eyes don't get everybody at once. तो यूजुअली क्या होगा, मैं पहला देखूंगा, दूसरा, तीसरा. तो आई वुड हैव डन कि बड़ा फोटो रख के बाजू में आई वुड हैव मेड टेस्टिमोनियल्स. वो ज्यादा वर्क करता. नाउ द प्रॉब्लम इज, ओके, दिस इज बैड. मतलब ये तो दिख ही नहीं रहा है. रिक्लेम योर लाइफ नेचुरली. ओके, लेट्स लर्न मोर पे क्लिक करते क्या होता है. नाउ इफ यू सी, okay, this is like, just imagine this. You read something कि reclaim your life naturally, okay, and then that's the reason you click. अगर आप अपने, just think about yourself कि आपने एक simple reason से click किया है कि reclaim your life naturally, right? Let's say I click and learn more पे मैंने click किया. You are a first time visitor. Now next page is menopause made easy. The problem is relevancy गई. At least अगर वहां पे कुछ headline mention की है, mention the same here, and then you can continue, because यहाँ पे ही वो बंदा निकल जाएगा. There are a lot of people you might be losing here. So yeah, give me a second. So I hope you get the idea so far. कि what I want to say कि you have to make sure कि वो जो भी आपका process है, हाँ, वो जो भी आपका प्रोसेस है, you are going through that process only, and you know कि what people are trying to achieve, and just design. That's why you have to know the roles कि वो किस रोल से आया है and किस जर्नी से जाएगा. You know, biggest problem here is happening कि जो बंदा वेबसाइट बना रहा है या फिर जो बंदा लैंडिंग पेज बना रहा है, वो ये नहीं समझ रहा है कि कितना अनएजुकेटेड है वो कस्टमर जो लैंडिंग पेज पे आने वाला है. कितना कम टाइम है उस बंदे के पास जो लैंडिंग पेज पे आने वाला है. कितना कम इंटरेस्ट है उस बंदे को जो लैंडिंग पेज पे आने वाला है. So you have to understand who is your customer, what you are trying to accomplish. So this is something you guys need to do. You need to recognize that there are two things you can do. One thing which I want to share here. For example, I'll tell you a good example here. Make my trip. I'll do it later. Let's go for next one. This is desire. Desire. So tell me, what do you mean by desire? Like, एक बंदा है जो आपकी वेबसाइट पे आया, he is there, he is interested, he's paid attention so far, उसको इंटरेस्ट भी आया है. Now what's next? What's the next thing? Desire. How you think you can bring the desire कि जो आपको चाहिए वो एक्शन ले. Okay, so there are three things which you can, if you violate, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते in terms of getting people to act. Okay, three things which you have to make sure कि वो at least that's the basic fulfillment requirement. Number one is make them feel safe. Feel safe. Okay, उनको ये लगना चाहिए कि they are like safe. Safe जैसे मैंने कहा कि किसी भी point पे ऐसा लगा कि they are doing mistake. Okay, another thing is they should feel they are in control.
just because people who feel, जिनको ऐसा लगता है कि they are not in control, they lose their senses, उनका वो mindset change हो जाता है. तो they should feel safe, they should feel in control, and they should be feel appreciated. Feel, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस से, you should recognize कि it's okay to have that problem and we are there to help them and provide the solution. Okay, this is something you guys need to understand, because अगर the thing is, अगर if at any point अगर ऐसा होता है कि people feel कि जैसा हमने देखा बोट वाले एग्जांपल में देखा, शिल्पा शेट्टी वाले एग्जांपल में देखा, I clicked on a certain picture, next पेज पे मुझे पहले वो नहीं दिखा, I'm not feeling safe. Now you might say कि why, and it's very illogical, like ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से मुझे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, but just imagine this, the problem humans have is कि human brain जो है that has a negativity bias, just because कि जैसा if you think about human brain का जो development है, it happened in a time जहाँ पे hunter gatherers के time पे हुआ था. Now imagine this, उस टाइम पे जहाँ पे there is no resources और आप अपनी फैमिली के साथ हो. The thing is कि एक पर्टिकुलर जगह है, वहां पे कुछ चेंज हो गया. लेट्स से कि यू आर गोइंग, आप रोज एक राउट से जाते हो, रास्ते से जाते हो, और आज आपने देखा कि वहां पे कुछ चीजें टूटी फूटी पड़ी है, या फिर जस्ट वैसे लाइक आज का एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से कि आप अपने घर से बाहर गए, अभी लेट्स से आपके पीछे आपका कोई फ्रेंड आके आपके घर पे रहा था विच यू डोंट नो. ना उसने पूरा उलट फुलट कर दिया और आपको नहीं पता था. व्हेन यू कम बैक होम, शायद उस चीज से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा अगर कुछ यहाँ से उलट फुलट हुआ है, बट वी फील द फियर, बिकॉज पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लेट्स से कि आपके आसपास कुछ चेंज हो रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट इट इज, इट क्रिएट फियर. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यू आर लिविंग विथ योर फैमिली और वहां पे पीछे झाड़ियों में कुछ चीजें हिल रही है. हो सकता है वो सिर्फ हवा की वजह से हिल रहा है, बट इट माइट पॉसिबल कि वहां पे कोई सांप हो जिसकी वजह से आप मर सकते हो. दैट इज वाई वी आर हाइपर अटेंटिव फॉर फियर्स. फियर जो है देयर इज वेरी डोमिनेंट इमोशन. सो यू हैव टू मेक श्योर कि जितना भी स्टेप्स है वेबसाइट पे, जो जर्नी है कस्टमर्स की, एट एवरी सिंगल पॉइंट आपको उनको हाथ पकड़ के बेसिकली गाइडिंग देम, और उनको हमेशा ये फील आए कि दे आर सेफ इन सेफ हैंड्स. सो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड. सेकंड वन, दे शुड फील दे आर इन कंट्रोल. अगर उनको लगा कि दे आर नॉट इन कंट्रोल, जस्ट लाइक फीलिंग सेफ. कंट्रोल का मतलब यही होता है कि let them decide. Never like don't try to push too hard. कई बार बहुत ज्यादा push करना भी it's a problem. So don't try to push too hard. And the last and important thing, they should feel appreciated. मतलब कि share the knowledge about the things which you want to sell to them. Make them realize कि what you can actually deliver them. जितना उनके पास information ज्यादा होगा, the more information they know about your product, your service, and the pain, about their pain, जो आप रिजॉल्व कर सकते हो, द मोर दे विल फील अप्रिशिएटेड, दे विल फील मोर नॉलेजेबल, पावरफुल और अंडरस्टूड. सो दिस आर द थिंग्स which you need to understand. Now ये तो जो था that was pretty basic things. अभी जो बात करेंगे that is more important. आप में से कुछ लोग ऐसे, even my own company the run I mean we are like planning to do this, not doing it yet. Ki what you can do is you have a certain system, ki you have a, let's say, ad, landing page, and convert directly. You expect them to convert. Now the big problem is कि there are a lot of people who stuck in desire phase, कि उनको desire है पर doubt भी है. desire तो है but they have doubt and they are not taking actions. तो इसके बीच में कुछ एक्टिविटीज वो करते हैं which you have to make sure कि you are paying attention and you are creating a certain system for it. For example, desire से doubt के बीच में हो सकता है कि they are doing research. आपकी प्रोडक्ट let's say कि they are going in a market and checking दूसरों के reviews. कि what they are doing. They are doing comparing. They are comparing. They are getting more details. They want to know more.
they might be socializing and asking other people about your opinion. And now अभी क्या हो रहा है कि आज के जमाने में it can happen on social media as well. And then they might want some customized solution. They might want कि आपकी product, they might feel कि वो शायद उनके लिए नहीं है. तो ये 5 चीजें हैं they might be doing in that particular phase. So what you have to do, you have to make sure कि ये पांचों चीजों का कुछ ना कुछ आप अपने एंड से एफर्ट दे रहे हो. फॉर एग्जाम्पल रिसर्च. इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, व्हेन दे आर डूइंग मोर रिसर्च, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेट्स से कि मेन पेज पे आपने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डाला है, बट मेक श्योर, लेट्स से कि आपने जैसे ई कॉम साइट हमने देखी, तो वहां पे फर्स्ट फोल्ड में सारा इंफॉर्मेशन है, इवन बाय नाउ बटन भी है, बट देन ट्राई टू राइट लॉन्ग थिंग्स. सो व्हाट हैपेंस इज, जिन लोगों को ज्यादा रिसर्च करना है, दे कैन डू इट. यू कैन ऑल्सो कंपेयर अपफ्रंट, and this is one of the ninja tricks you can use. Even if you are bad, okay, there is something called reason respect bias in our brain. I won't explain kya hai because abhi time nahi hai uska, but there's something wrong with our human brain. agar koi humko koi reason de deta hai, we usually accept it. But theek hai, so let's say ki you have some product which is expensive, more expensive than other person. Let's say कि कोई बंदा, आप जो चीज बेच रहे हो वो बंदा 500 में बेच रहा है, आप 600 में बेच रहे हो, सेम चीज है. नाउ इफ यू आर ऑन वेबसाइट, इफ यू जस्ट मेंशन दिस कि यू शुड बाय फ्रॉम मी बिकॉज आई मेड इट, या फिर बिकॉज मैं बेच रहा हूं. नाउ इट साउंड्स इलॉजिकल बट इट स्टिल वर्क्स, सिंपली बिकॉज पीपल आर नॉट दैट सोफिस्टिकेटेड. लोग उतने सोफिस्टिकेटेड नहीं है. So this is something you guys need, you can do. Even I recommend that try to compare your product with your competitor's product on your website somewhere, जिससे होगा क्या कि लोग, people can know you are being honest, you are being truthful. So this is something you guys can do. Getting details is the same way research, जिसे हम, if we are writing longer content on our website, there is more chance people will do it. Socializing, what they might do is they might go in some groups जहाँ से उनको information मिले. You might not control outside influence in terms of वो किससे बात करेंगे, but you can control at least online वहाँ जहाँ पे you can give them like there are a lot of people who are doing commenting on replies and all that can be done. You can go, there can be some groups जो शायद उस particular subject में के हो. For example, if you are in tech industry, तो यू कैन आस्क समबडी फ्रॉम योर टीम कि वहां पे जाके वो अपना ओपिनियन शेयर करे, आपके प्रोडक्ट की अच्छी और बुरी दोनों बातें शेयर करे, एंड देन दैट विल ब्रिंग ट्रस्ट एंड पीपल आर मोर लाइकली टू टेक एक्शन फ्रॉम देयर ऑन एज वेल. कस्टमाइजेशन कुड बी के यू कैन गिव सम गाइड्स, और आपके यहाँ पे भी वीडियो हो कि व्हाट्स द राइट फिट फॉर यू, ऐसा कोई जहाँ पे आप स्पेसिफिकली उन लोगों को दिखा रहे हो कि इफ द प्रोडक्ट इज राइट फिट फॉर देम और नॉट. So these are 5 things you can do. Make sure you're writing out longer content after the first fold basically, जिससे लोगों को information मिले, and try to, जो भी competitors है उनके product के साथ directly try to compete with them. Try to show people that these are our competitors who are also doing the same, but we are better. Let's say even if you know you are not better, just write you are better, and there are people who will believe it for sure. So yeah, I hope अभी तक समझ आया. Make sure longer content लिखो, make sure relevancy रखो. Ultimately, look, realize this. If you can just take away one thing so far, don't screw up with the safety of people. Fear कभी trigger नहीं होना चाहिए sales process. अगर fear trigger हुआ, you can do everything right and still lose the money. There's a good book, I know. There's a name of the book जो मैंने पढ़ी तो नहीं है, but there's a good title that how to fail at almost everything and win eventually, which is a kind of a nice title. You can think of the same कि आप लोग सब कुछ सही कर सकते हो. 90% of the things are very optimized on your website.
the only problem will be कि वो वेबसाइट पे आने वाला बंदे को वो सेफ्टी फील नहीं हो रही है, and then that's a thing, that's where you lose everything. So I hope you get the idea, and yeah, if you have any questions just let me know, or else we are going for the next thing, which is action. On a first page, if you presented something, you write like some headline, make sure there is some congruent thing in every pages. Let's say you are writing an email and you mention some promise, you should end your email in a way कि next page पे पहले वही दिख रहा है, पहले fold में at least वो दिख रहा है. Or else what you can do, the best thing you can do, use the same background image as your landing page. So at least I know that's, you know, that's a part of the same thing. If you don't have anything like relatable, let's say you don't have anything relatable with the landing page, but at least you can have the background relatable. Yeah. Any other questions? It means that we have to use different landing page for different ad platform. Ideally, yes. Ideally, yes. But agar if we don't have the resources, what we should do is like we can plan out our whole campaign in a way कि उसका theme at least एक रहे. At least what you can do कि जो ads है that is ending on a same note. So जो लोग आ रहे हैं वो ऐसे ही लोग आए who need that particular product or service. But ideally, yes, if we want landing page, then different landing page will always works better. And it is not practical. That is why it's important that you have to decide what is the lifetime value of your landing page. Like if you know कि आपको पता है कि ये landing page we are going to use for 2 years, then you can pay extra attention and make sure कि 4 different landing page बने हुए हो, because आपको पता है कि 1 करोड़ रुपए शायद उस पे spend होगा. So then it makes sense कि 4 landing page बनवाओ और उसको optimize करो. But if you know, if you are not certain about the value, that is why it's important कि हर landing page बनाने से पहले estimate the value. Like for example, one of the pages we use for Millionaire Mindset, that page generated over 60 lakhs at almost 4x the amount. Basically 15 lakh का spend था और 60 के around revenue है. So we know, and we thinking about, we have planned that might go up to like in 7-8 CR in terms of revenue. So we know कि हम उसको किस तरह prioritize करें instead of other programs जो शायद उतना scale नहीं कर पाए. Okay. So last one, action. That is, last is action. So make sure, number one thing you should do, have CTA. At least have some CTA where people can take action, because कई बार लगता है कि this is very obvious. This is not obvious. अगर हमने just give me a minute, let's see. अभी जो websites देखी हमने, let's see, check that again. Okay, like, okay, I hope she has some CTA. The problem is पहली website, the problem is there is no CTA. She can't book, you can't book. Let's say I'm interested, मुझे चलो इतना देख के भी मैं interest, वैसे interesting page तो है नहीं, but let's say I'm interested, like click, if I click, not happening, नहीं हो रहा है, so it's bad. This is the best example I could find. Let's say, let's go next. I didn't expected this. If you think, if you
if you think about this, the problem is a lot of e-commerce sites have a pay button here. Yeah, they are losing a lot of business. These people are also losing business. I'm not sure about this, but I might test this. अगर मेरे पास इसका control होता, ये I am used to buying from this end. मतलब कि दूसरी side पे होता है usually. And one of the biggest mistake, if you see, if you guys want to see the biggest unconscious blunders, see कि यहाँ पे शिल्पा शेट्टी I think is lower, मतलब पैंट या फिर जो भी नीचे पहना है, that is black color, or color of the button is black. So somewhere it's kind of merging and I'm not able to get it. And make sure करो कि आपका जो भी button है that is separated. If you can see, here is a black color, the button is a black color, and that is merging. And कहीं ना कहीं most people are used to buy from this end, so that might. So let's see what happens अगर मैं buy now पे click करता हूँ. Okay, cart में आया. Okay, nice, decent process. Got it. This is a decent process. Not a problem. Let's see. बाद में देखते हैं इसमें से कुछ. Yeah. Okay. यहाँ पे complete order, which is nice. This dude has a good CTA at least. Let's see if she has a CTA. Book now. There is no CTA. There is, like, if I click on CTA, like book now, like they are giving me form that fill out the form, और वो भी नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे है. Like it's merging between the background, so this is bad. Yeah, this is something you guys can do. Like, look, this is very nice compared to the first website. If you want to see, अगर मैं यहाँ पे scroll कर रहा हूँ ना, तो I lost where to buy now. Okay, now see what these guys have done. I am in control. Anytime I feel like buying, I like buy now. So this is nice. Like you can have this static thing where you, bottom में you can fix it कि वो button हमेशा ये दोनों button दिख रहे हैं, which is nice, which is better than this particular website. Let's go to boat. They don't have buy now button, which is bad. And now even here they don't have the buy now button. I can bet on it, confirm, but confirm order से ज़्यादा buy now button will convert more. Okay, got it. Let's see Dr. Bindra में है क्या. Okay, if I click here, okay, bad pricing, but it's okay. Premium seat, premium. Okay, this seems like nice, but proceed. Yeah, which seems like a decent option. So I hope you guys understand. Even it looks like that people give CTA, they are not. It's usually not the case. CTA काफी साइट्स में नहीं होते हैं. I can bet on it. पिछले ही साल में एटलीस्ट 15-20 हजार का बिजनेस मैंने लोगों को नहीं दिया बिकॉज उनके साइट पे CTA नहीं था. काफी बार होता है. Okay, there's another site which I want to review. Just give me a second. Giftify. Okay, Giftify. Unique gifts, new and memorable gifts. Okay, nice. Let's see. Impress your loved ones. Okay. There is a look. When come to gifts, a personal recommendation on gift website, use emotion. There's no emotions here. And कहीं ना कहीं you have to make sure कि the problem is attention के बाद I don't know where to go. The good part is कि ऊपर सारे options है, anniversary, birthdays, couple gifts, which is a good part. But यहाँ से I don't know where to go from this one. जहाँ पे सबसे पहले मेरी नजर गई new and memorable gifts,
rather you can have something very specific, or you can have a video where it shows the emotions. Because gifts, I can bet you can charge 3x the price for the same product agar if you can add emotions. And let's say let's go on any product and see कि आगे क्या है. Okay. Oh boy. So there's no way, I don't think we can order like on website, right? This is a order from WhatsApp. Okay. Buy now. Oh, the WhatsApp, actually, if you think about it, what I would have preferred is use different color button, because look, यहाँ पे ये black, this is black, this is black. मुझे दिखा ही नहीं. When I was scrolling, मुझे दिखा ही नहीं. So that is the number one. Okay, nice. Check out buy now था. The problem यहाँ पे भी एक हुई कि if you think about it, you clicked on buy now, next page पे आया checkout. So I feel unsafe here. Because मैंने click किया था buy now पे, यहाँ पे आया checkout. Words different है, but make sure करो कि if you can buy now here as well, it will work better. For CTA, he needs black color. Yeah. And checkout, यहाँ पे buy now you can change. After that, I think a Spotify site, right? It seems like a nice site. Baki yaar, okay. Checkout page required to upload photos. Okay, that's okay, because the people know okay, they are doing something customized. That is for sure. That's not a problem. It's about the words change, not anything process में कुछ change नहीं करना. And you said कि your client told you to black color. Like वो किस तरीके से समझ नहीं आया मुझे. Like he wants a black color in the button font. Like why? I mean, then change the other part, then other font color. Like you have to make sure कि buy now का button दिखे. That's it. I hope, yeah. So if you have any question regarding this, please ask, or else we are going to get to the best part of the session. Yeah. Okay. Yeah. So, yep. And one more thing with the action step, make sure go to Amazon, go to any top 3 sites from where people do checkouts. मतलब कि एक कॉमन पैटर्न. द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द कल्चर यू आर लिविंग इन. जैसे मैंने बोला सुबह कि zigzag पैटर्न में अवर आई सीज, अगर मैं किसी ऐसे इंसान से मिल लूंगा जिसने पूरी जिंदगी उर्दू सीखी है, मतलब पूरी जिंदगी उसने उर्दू स्टडी करी है, लाइक फ्रॉम समबडी फ्रॉम अरब, उसके लिए मुझे वेबसाइट उल्टी बनानी पड़ेगी, बिकॉज देयर आईज वर्क्स डिफरेंटली, बिकॉज दैट्स अ कल्चरल डिफरेंस, नॉट अ जेनेटिक डिफरेंस. तो उसी तरीके से हमारे आसपास जो वेबसाइट टॉप पे है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि somebody is, you are one of the clients is used to कि वो Amazon पे महीने में 5 बार ऑर्डर करता है. He is familiar with certain process. Okay, so you can modify your process in a way कि उनको लगे कि वो Amazon पे ही शॉपिंग कर रहा है. Almost similar kind of experience आ सकता है. So that is something you can try. Even not related with e-commerce, you can give it a same feel. So that is something you can try. So I hope it's helpful for you guys. मुझे तो अभी तो मजा आ रहा है.
Okay, so let's go to next part, which is the last part, and might take an hour. So yeah, मुझे नहीं पता exactly कितना time लगेगा, but yeah, and which is psychological mismatches. She is not attending. Okay, so we are talking about psychological mismatch. So you have to understand, सबसे पहले the most important thing, अगर आपको not only landing pages marketing में खुद को improve करना है, which is empathy. If you don't have empathy, if you cannot see, अगर आप अपने customers के नजरिए से दुनिया को नहीं देख सकते, it's going to be impossible कि you can be a good marketer. Let's say कि on a 0 to 100 scale, okay, 0 to 100. Thing is, it's impossible कि आप किसी की नजरिए से 100% देख पाओ. It's impossible. Okay. Now the thing is, let's say you are at 10% right now. If you get to 50, your marketing will get 40% better, like 40x better, I can say. Because जब आप समझोगे कि वो बंदे को क्या चाहिए, उसके पेन क्या है, वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है, that is something you guys need to understand. So empathy is something you should have whenever you're thinking about your client. Because कई बार क्या होता है कि empathy नहीं होती, we don't understand कि वो क्यों कर रहा है जो वो कर रहा है. And the best part is, if you are ever frustrated about anybody outside, like if you are frustrated with your wife, husband, mom, dad, या फिर अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी से भी अगर जिंदगी में भी कभी एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड हुए हो ना, तो अंडरस्टैंड यू डोंट हैव द एम्पैथी, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनको जो वो लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. they are doing, everybody does things because it makes sense for them. उनके लिए वो चीज वैल्यूएबल है और या उनके लिए चीज मैटर करती है, that's why they are doing it. Now you have to figure out why it's matter to them. In the same way that is with your customer. आपको अपने कस्टमर्स का भी बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड. फॉर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ 5 Y and H, जो सिंपल से आपने सुना होगा, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ. ये 6 चीजें हैं विच यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर योर कस्टमर्स. Basically, who is your audience? Number one, who is your audience? You have to understand the demographic, psychographic, segmentation, किस टाइप के लोग हैं, क्यों आते हैं, and you have basically जितना information इन लोगों के पास बारे में आपके पास हो, it is important. You can use Google Analytics, you can use any analytical tools, उसमें से भी आपको काफी information मिल जाएगी. Then understand what task they are trying to accomplish. वो कौन से टाइप के task करना चाह रहे हैं आपकी वेबसाइट या फिर आपके लैंडिंग पेज पे आके. देन वेयर इन दैट्स वेयर एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो इंटरेक्शन कहाँ पे हो रही है. आपकी वेबसाइट के कौन से स्पॉट्स पे वो पर्टिकुलर इंसान डिसीजन ले रहा है कि वेयर ही इज बाइंग, कहाँ पे जा रहा है. लेट्स से मल्टीपल पेजेस हो तो वेयर इज द थिंग हैपनिंग. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से पेज पे वो बाय कर रहा है, कौन से पेज पे आके उसको फिर वो मूवमेंट आ रहा है कि वेयर द पर्सन इज बाइंग. लेट्स से कि यू आर टेस्टिंग डिफरेंट थिंग्स. ओके, एनी लेट्स से यू हैव अ लैंडिंग पेज, योर हेडलाइन टू नो 5-6 buttons and you are testing it. Now I recommend sometimes, मैंने देखा है काफी लोगों को कि एक ही पेज है and they are using only one button, मतलब कि एक ही लिंक यूज करते हैं. If possible, अगर आपके वेबसाइट पे 6 बटन है, try to use कि you are using different kind of links, तो you know कि पहले बटन से क्लिक आया है, सेकंड बटन से क्लिक आया, थर्ड बटन, because what it will tell you कि बंदे ने कब लिया. What it will do, it will tell you exactly कि उस बंदे ने कौन सी जगह से उस पर्टिकुलर चीज को बाय करा. एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि
उसके ऊपर का फोल्ड है that is important, नीचे का फोल्ड is not important for that particular audience. And the best part is, I'll tell you something, this is out of box, but let's say कि just give me a minute. So basically, let's say you have a landing page, right? And you have first button. The problem is कि if you have only one link, you are not able to track कि वो बंदे ने कौन सी लिंक से बाय किया. Now let's say कि you know कि अब now you are using separate links and you are knowing कि किस individual customer ने कौन सी link से buy किया. And you know कि he bought from the bottom. Now what that can be used is कि you know that person is a skeptical person. वो बंदा ऐसा है कि उसको बहुत ज्यादा information चाहिए. He takes time to make decision. You know it. So what you can do in future you as well, जो भी sales call या फिर जो भी बंदा उसके साथ coordinate कर रहा है, you know, या फिर आपकी फ्यूचर जो मार्केटिंग है, दैट कुड बी लॉन्ग मार्केटिंग टू दिस काइंड ऑफ पीपल, और जिसने लेट्स से पहले में ही बाय कर लिया, यू नो कि दिस पीपल आर फास्ट एक्शन टेकर्स, सो यू कैन कैंपेन पूरा उस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस अभी तक. हु इज योर कस्टमर, व्हाट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, एंड वेयर, वो कौन सी जगह से बाय कर रहे हैं. when the decision process is happening, कब हो रहा है, when is the time, how much time is taking, like वो कौन सी feeling, like let's say कि your average visitor time जो है that is like 10 minutes, so at what time he is deciding that he wants to buy, you have to have a rough idea कि वहाँ वो कब हो रहा है. And then last one is why a person is doing the things he is doing, वो क्यों कर, what is his reason for buying. And I'll tell you, अगर आपकी में 100 कस्टमर्स अगर आपको मिले हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, you can find at least 10-12 different reasons that person is buying it. I'll tell you a good example, थोड़ा extreme है, it's okay. There's a good book called Evolution of Desire by Dr. David Buss, in which he shares that when let's say a female and male, they are having like a romantic relationship, a male feels that you know, they feel generally 2-3 रीजन लोगों को लगते हैं कि this is the reason they are with them, एक दूसरे के साथ है, उसके 2-3 रीजन, because they love or something. Okay, he shared there are 236 reason that a relationship can happen. तो कई बार काफी बार ऐसा भी होता है कि a girl is with a guy because उसके ex boyfriend ने उसके साथ cheat किया and now she just want to take a revenge. That's just one example. तो शायद आप अगर आप वैसे नहीं, और nobody can in the world can predict कि वो तो 36 रीजन कौन से है. इन सेम वे आपके वेबसाइट पे आके कोई ने किसी ने प्रोडक्ट बाय करी, देयर इज नो वे कि आप उसको इवन इमेजिन भी कर पाओ. देयर इज नॉट इवन अ सिंगल % चांस कि यू कैन इमेजिन इट. आपको वो कस्टमर से ही निकलवाना पड़ेगा. यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च, डेटा एनालिसिस, उन लोगों से पूछना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये आइडिया आएगा कि why they are doing it. For example, let's say कि you are selling a certain product and you feel कि उस बंदे को अपने वहां पे ग्रोथ चाहिए इसलिए कर रहा है, बट जरूरी नहीं है, शायद he has a totally different reason. He just wanted कि like I just shared a good example कि let's say कि you are selling some kind of product or service which can be tax deductible, let's say कि insurance. Now you feel कि उसने किसी ने इंश्योरेंस बाय किया just because he wanted to buy insurance और he wants कि उसकी फैमिली सेफ रहे. There is a possibility कि उसने इंश्योरेंस इसलिए बाय किया है because not because of the safety for the family, but उसके लिए बाय किया क्योंकि उसको टैक्स ना भरना पड़े. He can get the tax deducted from it. अगर आप उस माइंडसेट में नहीं हो, the problem is you are never able to understand it. So this is something you guys need to understand. Then how, वो जो है अगर वेबसाइट पे टास्क जो कर रहे हैं लोग, वो किस तरीके से कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन, योर पैटर्न्स के किस तरीके से डिजाइन पैटर्न्स, योर कॉपी एंड योर सिस्टम, कि आपने क्या सिस्टम टेक्स्ट सेट करा है. सो दिस आर लाइक 6 फैक्टर्स दैट इज यू शुड कंसिडर ऑन एवरी सिंगल वेबसाइट. सो आई होप इट्स क्लियर सो फार.
Give me a minute. There's a comment chat. Okay. Just a minute. Okay, so I hope you get understood so far. Now next thing is, you have to, or if you already have a website or something, make sure the analytics जो भी है वो डाले हुए उस पे, because basic information like demographics, device usage, time, this have a dramatic impact on certain things. Because look, there are a lot of things you have to understand. कि you might be working with a client कि जो certain particular, like for example हमने एक website देखी about a menopause, right? Now that is for women after like she completes her periods and all, like there's a safe transition जितना मेरे को समझ आया. I'm just guessing it, but let's say कि वो है. You have to understand कि women, whatever the age जो भी women है, when she is going through the time, let's say कि एक certain age के बाद where the problems occurs, you might find the whole Indian data where you find कि periods, मतलब the sale of pads, basically sale of sanitary pads might be related with the time frame. For example, let's say, I'm not sure, मुझे नहीं पता, but there can be data can be found around this. So let's say you know कि there is certain date like 28, 29, 30. ये तीन में सबसे ज्यादा सेल्स होती है पैड्स की इंडिया के अंदर. Now once you know this data, you know कि there are certain dates जहाँ पे your product can be more appealing. And it sounds, it sounds crazy, but it works because there are a lot of scientific studies that says even men and women, okay, when female जो face होता है, that changes, the perception of man changes when she is in the time of ovulation. मतलब कि when there's highest chance of pregnancy in a woman. अगर किसी सिर्फ बाहर से देख के भी human brain can judge it from just seeing a female. That happens on a very subconscious level. तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो भी, उनका भी सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ हो रहा है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से टाइम में, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो बिजनेस में क्या क्या चीजें इफेक्ट कर सकती है. इज इट लाइक अ सर्टेन टाइम, सर्टेन डेट्स. फॉर एग्जांपल जो हमने गिफ्ट वाला एग्जांपल देखा, नाउ इन दोस काइंड ऑफ वेबसाइट, अगर वो उस वेबसाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ इज दैट कि आज फ्रेंडशिप डे है, देयर इज नथिंग अबाउट फ्रेंडशिप डे मेंशन देयर. लाइक आज कोई आता है, द टॉप ऑफ द माइंड थिंग इज फ्रेंडशिप डे. So that is something you guys need to understand. कि आपकी वेबसाइट, if it's a highly related with any kind of events, that is something you should consider. और वो depend करता है business to business, vary करता है. Now let's talk about the next thing, which is, this is out of concept, जो करना नहीं था but कर लिया. Now you have to understand human brain. अगर लास्ट टाइम इसमें से किसी ने अटेंड किया था, शायद सेम चीज पे बात करी थी. आई एम नॉट अ गुड एट ड्राइंग, बट लेट्स से दिस इज ब्रेन. सोच लो है, भले नहीं है, बट बेसिकली वी हैव 3 ब्रेन. सबसे पुराना दैट्स कॉल्ड रेप्टिलियन, जैसे क्रॉक ब्रेन भी कह सकते हो. आई डोंट नो, स्पेलिंग भी गलत है शायद. विच, जहां से सबसे इंपल्सेस जो आपके आते हैं, that come from your left सबसे primitive brain. Okay, then you have your limbic brain, which is this
which is center of social things around you, and the most important is your highest brain, which is neocortex. Now, why we need to understand, I want some of you, I recommend everybody of you just go there, like go online, just study a little bit about brain. मेरे पास उतना आज टाइम नहीं है कि आई कैन कवर एवरीथिंग. इन फ्यूचर आई माइट ट्राई टू कवर, बट अभी टाइम नहीं है. बट लर्न अबाउट ब्रेन्स बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड. हमेशा देखो, आई कैन टेल यू एग्जैक्ट प्रोसेस आपके ब्रेन में होगी. लेट्स से कि आप कहीं पे नई सिटी में गए हो और लेट्स से कि कोई पुलिस की गाड़ी आके आपको रोकती है, वो बंदा पुलिस की ड्रेस में है. सॉरी, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गाड़ी अचानक से आपको आके रोकती है एंड आपको नहीं पता कि क्या गाड़ी है, कौन है, तो फर्स्ट थिंग इज लाइक फाइट और फ्लाइट ट्रिगर होगा. सबसे पहला रिएक्शन ट्रिगर होता है ह्यूमन में, फाइट और फ्लाइट. सेकंड, लेट्स से कि आपने देखा कि वो कौन है एंड ही, यू कैन सी कि ही इज इन द लाइक अ कॉस्ट्यूम ऑफ पुलिसमैन. सो देन इज लाइक कि उसके बाद जो चीज होती है वो दैट्स अ सोशल थिंग, दैट्स अ स्टेटस कि इज इट अबाउ यू और बिलो यू. व्हेन कम्स टू पुलिस यू फील कि ही इज अबाउ यू, एंड देन योर नेचुरल लॉजिकल प्रोजेक्शन चालू होता है. सो दिस इज द, जब भी कोई नया सिचुएशन में एनकाउंटर करते हो, दैट इज द एग्जैक्ट सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू. फर्स्ट आवर ब्रेन ट्राइंग टू इवैल्यूएट इज इट सेफ और नॉट, पहले कि वो जगह पे जाना सेफ है कि नहीं. सेकेंड इज की इज इट लाइक आई एम, मेरे से इम्पोर्टेंट है या नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ स्टेटस. और तीसरा, उसके बाद लॉजिकल प्रोसेसिंग चालू होती है. नाउ यूर, इफ यू थिंक अबाउट योर लैंडिंग पेज, 99% ऑफ योर कस्टमर विल फील कि उनका तो पहली, मोस्ट ऑफ कस्टमर एक से दो बार से ज्यादा आपकी, स्पेशली अगर लैंडिंग पेज है तो नहीं आने वाले, वेबसाइट है तो भी उतना रेगुलर तो नहीं आते. इफ यू आर नॉट लाइक Amazon, जिस पे लोग ऑलमोस्ट उनका डीए यूज नाउ इन मिलियंस. बट दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट, आपका जो फर्स्ट अबाउट द फोल्ड हो, इसमें हुक ऐसा हो कि पीपल फील देयर इज समथिंग फॉर देम, बिकॉज देन एंड ओनली देन पीपल आर एबल टू, उसके बाद ही उनका लॉजिकल प्रोसेसिंग चालू होगा, वही उसके बाद ही वो आपका मैसेज सुनेंगे. सो एंड अनदर थिंग इज try to bring trust if you can from PR things. There are, you know, having photos of celebrities. हमने शिल्पा शेट्टी वाला जो एग्जांपल देखा, now that instantly not only build trust, but that says that, you know, that is something, the product is about the person. Like if somebody like a female is going there, जो who likes शिल्पा शेट्टी, तो उसके लिए वो इमेज, जो प्रोडक्ट का इमेज है ना, उसका परसेप्शन बहुत ही अच्छा बन गया, that because the perception is about them. So that is something you guys need to understand. उसके बाद जो भी आपका logical explanation है होना चाहिए, but at least when a person first time visiting your website, उसका fight or flight ही trigger होगा. So you have to make sure कि आप उसमें you are seeing कि वो बहुत ही negatively आपको impact ना करे. अगर आपकी वेबसाइट को देख के if I am confused, जैसे कि वो कौन सी Mind Evolution I guess, 90 I can bet कि if we put somebody in a brain scanner, MRI scanner, उन लोगों को वो सिर पे वो मशीन लगा के उनको बिठा दो, and we are seeing their brain activity, I can bet on it people's trigger response will be stress, fear, cortisol उनके बॉडी में बढ़ रहा है. So understand that your website should always create positive emotions. So I hope it's clear. 3 brains, ज्यादा कुछ अगर ना समझो तो इतना समझो कि फाइट और फ्लाइट ट्रिगर होता है सबसे पहली बार अगर कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट को देखेगा. सो उसको ट्रिगर, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग, और अपने पॉजिटिव करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग. सेकंड, कैन यू मेक योर वेबसाइट, अगर ऐसे फोटोज हो जो यू नो, हमने विवेक बिंद्रा में ये गलती देखी कि उन्होंने दूसरे लोगों के फोटोज यूज नहीं करे. कोई अननोन पर्सन है जो रणवीर को जानता है, डॉक्टर बिंद्रा को नहीं जानता, देयर इज अ चांस कि सिर्फ वो फोटो रखने से वो इंस्टेंटली वो ट्रस्ट आ जाता. एंड थर्ड, उसके बाद प्रोग्राम का इंफॉर्मेशन एंड ऑल विच इज मैटर्स. ओके, सो आई होप यू गॉट द क्लियर आइडिया. Another thing you want to learn, if it is 3 types
of how people learn. लोग किस तरीके से सीखते हैं. There is, you might have heard of this. More people are auditory, visual, and kinesthetics. Some people feel, some people see, and some people hear. So आपको भी देखना होगा कि what kind of audience you have. There's a good channel. Let me see if I can remember the name. Growth design. Give me a minute. Yeah, I hope you are able to see my screen now. Is my screen visible? Okay. Good morning. Okay, so if you see, this is the website which is primarily dominated by visual aspects of the things, and it's kind of like a very emotion generating website. So it's appealing to visual and kinesthetics. So आपको भी अपने audience को figure out करना पड़ेगा कि what kind of audience you have. There are some websites वहाँ पे they have a static photo and audio चलता रहता है. They're like their whole page is in audio itself, and it works on a lot of people. उसी के अलावा I am not sure, but I am going to test this something in the future. This web page है, people have option to listen the information on audio, which I want to test in the future. मैंने अभी तक कोई website नहीं देखी है. If you have seen any website, mainly for example Amazon पे गए आप लोग, ठीक है? Now I don't want to read, मुझे पढ़ना नहीं है. So I can ask Alexa or something, tell me the whole information. I am not sure कि Alexa में होता है कि नहीं होता, but tell me the whole information about iPhone 14. And they're like that I'm getting all the information on an audio form. I have not seen someone do it, but I might test. I want to test something like this in the future, because I think that's the future, because there are a lot of people who want to listen, को देखना नहीं. And if you think about, hearing is more primitive than watching screens, so it might work. So आपको भी ये चीज पता होनी चाहिए कि what kind of audience you are targeting, so then you can able to create those kind of designs, those kind of visual elements, and those kind of emotional. Are not things we can talk about very deeply, because it takes time to do it, and काफी चीजें आपको एक दिन में करना is not even possible. Okay, so I hope it's clear so far. You have to understand key 3 different concepts, and let me give you, I'll post this in the chat. Give you a minute, give me a second. Yeah, this okay. Just take a screenshot of this. Yeah, I hope the screen is visible now. You guys can take screenshot of this. Just a minute. Yeah. So first of one, for visual guided imagining demonstration, color coding कर सकते हो, diagram, charts दिखना, graphs दिखना, photos, maps, video clips. That's a particularly examples. Auditory में audio clips, oral instruction, presentations, poems, rhythms. I'm not sure where my phone is. There's a good app called I'm recently following. Just they're called a vocal image, which is more about the how you can use your breath. And this app, if you want to see, you can see. ये आपको एक हफ्ते का ट्रायल देती है. इसमें इन लोगों ने तीनों चीजें यूज करी है. बेसिकली
they have audio instruction, video instruction and activities as well. Activities involve जब आप सामने वाले से किसी activity में involve करवाते हो, that will up kinesthetic part. So I hope take the screenshot. I'm just like in a second I'm stop sharing the screen. Okay, so I hope you got the idea what I want to say. कि आपकी जो भी target audience है, and even look, the people who are looking for new business ideas, guys, simple सी चीज है. The more specific you can become, the more money you can make in the long run. Like for example, India is not in a state of niche market, to be honest. India में अभी भी there's a low trust society, so there's a very big scope for the people who are big. But eventually, जब लोग people are getting more educated, people are getting more information, getting more and more information, and trust is increasing. What happens? जितना transparency बढ़ेगा, the market for niche market will increase in India. That is for sure, because if you think that if you study history, that's a pattern. क्योंकि India में now what happens is, if a Tata is bringing something new, वो successful हो जाएगा just because Tata's trust name is there. वो तब तक होता है when people trust a person or brand over quality. But जब भी quality या फिर वो relevancy या फिर personalization matters, that so what you can do, you can create some kind of product just like a growth design, you know, वैसे ही you can create something like that to attain to get a certain kind of audience. That's just a thing. Yeah, so I hope अभी तक समझ आया है, थोड़ा बहुत बाकी है, so we will go forward with it. Now let me share few things. I have to see my notes. Is the yep. Okay, so let's get into cognitive styles. Now let me tell you, cognitive styles का मतलब होता है personality types. It is just a fancy name. I know 3 बजे मैंने बोला था खत्म कर दूंगा, but थोड़ा time, I think I hope you guys are okay, थोड़ा extra time, because I just want to share the last thing, which might take 20-30 minutes. Okay, thanks. I'm just going through the notes because these are like a little heavy stuff. ये पे मैं पहले से बता दूं, guys, you have to choose one of those things. I'm just giving you few options. I try to study almost every personality typing out system there, but you don't have to. अगर आपको landing page, you are somebody जो सिर्फ landing page में expertise करना चाहते हैं, तो आपको एक आधा personality typing system अगर आप सीख लोगे, that will work. So one of the personality typing system is Myers-Briggs. MYERS-BRIGGS. Basically, Carl Jung करके एक psychologist थे who developed this system, जिसमें we judge people on a 4 different criteria. Number 1 is कि उनका source of energy कहाँ से आता है, मतलब कि are they introvert or extrovert, मतलब कि introvert versus extrovert. Then information gathering कहाँ से करते हैं, are they sensors or intuitive, sensors versus intuitive. Then information process कैसे करते हैं, thinkers है या feelers, like thinking is the dominant or versus feeling is dominant. And lifestyle orientation क्या है, मतलब are they judgers and perceivers, मतलब किसी को देखते ही जज कर लेते हैं या परसीव करते हैं, like they are prefer to see their side of the story as well. तो ये इसी चारों का पैटर्न है, there is like a 16 combination जो हो सकते हैं. Now why it is important for you guys to understand, like you can understand, you can go through the whole thing. I'll give you few examples जहाँ पे ये useful होगा, because मैंने जितना study किया है
लोगों को लगता नहीं है कि इसका यूज कैसे करेंगे. नाउ थिंक अबाउट समथिंग लाइक दिस. लेट्स से कि कोई बंदा है, लेट्स से 24/7 जिम इन अहमदाबाद, इट्स अ बिग जिम, राइट? नाउ कंसिडर दिस. उस लोगों ने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया कि यू हैव टू मेक अ लैंडिंग पेज. आपको पेज बनाना है उन लोगों के लिए जिनको पर्सनल कोचिंग चाहिए. Now, when you don't understand any personality typing system, and let's say you created a good page, and but the problem is कि you put like 3 or 4 people working out, वहां पे जो वर्कआउट कर रहे हो 3-4 लोग आसपास दिख रहे हैं, they are happy, you know, working out. Now, if you don't understand, the problem is कि आपने ऐसा वेबसाइट बना दिया, but that might not only work, but that is might be go negative, just because think about that. Who is the person usually जिनको पर्सनल कोचिंग चाहिए, स्पेशली 1-to-1 कोचिंग चाहिए? दे आर मोस्ट प्रोबेबली दे आर इंट्रोवर्ट्स जिनको सोशलाइज नहीं करना है. व्हेन यू शो दैट ऑन योर वेबसाइट, आपने उन लोग बिना ये समझे कि वो इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, आपने जब वेबसाइट बना दी, द प्रॉब्लम इज कि दैट्स अ मिसमैच देयर. सो दैट इज समथिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर वहां पे 4 लोग हैं और 4 में से एक बंदा है जिसको पर्सनली कोचिंग करना है, बट ही इज इंट्रोवर्ट, वो 4 लोगों वहां पे जो दिखे वेबसाइट पे, उसी को देख के वो सबकॉन्शियसली दैट इज टर्निंग हिम ऑफ, राइट? सो दिस इज समथिंग यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ इट works. Now, one of the best system I personally feel, which is you guys can use. Just give me a minute. I'll share the whole thing. Still, please take a screenshot. And this is not my own thing, so मेरा content नहीं है. That's so don't use it publicly. But yeah, you can use for your learning purpose. So give me a sec. Second. I hope you are able to see the screen now. Just नहीं दिखा screen? नहीं. Okay, just a minute. A minute. स्क्रीन दिख रही है सबको? मैं बोला भाई. Okay, just a minute. Now it's visible.
So just take a screenshot. Now, just a minute. Yeah, take a screenshot and मैं यहीं पे इसी screen पे रखते हुए let's discuss क्या है. So you guys get a better idea. And like मैंने सोचा इसको ज्यादा क्लियर करेंगे, but let's see इसको डीप में थोड़ा स्टडी करते हैं. Now, anytime, understand this. When you have a group of people, okay, you have to understand one thing. कोई पर्सनालिटी टाइपिंग जो सिस्टम है दैट इज नॉट एक्यूरेट. 100% एक्यूरेट कोई सिस्टम दुनिया की नहीं है. The only reason personality system exists is only for one thing and one purpose only, कि ह्यूमन ब्रेन, जैसे मैंने शुरू में बात करी कि हमको कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं पसंद आती. वी वांट थिंग्स टू बी सिंपल. ओके, नाउ व्हेन वी वांट थिंग्स टू बी सिंपल, तो सिंपल चीजें जब चाहिए होती है तो वी वांट टू मेक श्योर कि हम लोगों को भी सिंप्लीफाई कर सके. हम लोगों को समझने के लिए दैट इज व्हाई वी कैटेगराइज पीपल. हम बेसिकली उनको जज कर रहे हैं कि ये बंदा ऐसा है. 100% वैसा नहीं होता है कोई भी, बट वी आर जस्ट जजिंग फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. जस्ट बिकॉज कि कोई बंदा चोर है तो इट डजंट मीन कि वो हर सिचुएशन में चोरी करता है, 24 आवर्स चोरी करता रहता है. फिर इंसान अगर भुक्खड़ है तो डजंट मीन कि वो 24 आवर्स खाता रहता है, ही इज लाइक ईटिंग फूड नॉन स्टॉप. इट्स जस्ट दैट कि हमने उसको एक लेबल दिया है फॉर अ सर्टेन because of certain habits. Okay, so in a same way, जब भी आप लैंडिंग पेज डिजाइन कर रहे हो, this is one of the thing, just a minute, हाँ, this is one of the thing you can use. It is, there is a 4 type system. अगर आप देखो ऊपर जो है 4 नाम दिए गए हैं. That's called director, socializer, relator and thinker. आपको ये परसीव करना, आपको ये समझना है कि ये 4 टाइप के लोग जो है वो आपकी वेबसाइट पे लेट्स से आएंगे. नाउ 4 टाइप के लोग जो मैंने पहले बात करी कि अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर के बटन पे कोई क्लिक कर रहा है तो देयर इज अ हायर चांस कि ही इज अ डायरेक्टर. अगर उसी तरीके से, मतलब बहुत ही डिसाइसिव, तुरंत ही कर रहा है, तो उसी फर्स्ट वन इज पेस, कि कितना जल्दी वो लोग डिसीजन लेते हैं. फर्स्ट वन इज फास्ट डिसीजन मेकर और बहुत ही जल्दी ही इज वेरी डिसाइसिव. सेकंड वन इज सोशलाइजर. ही इज अ डिसीजन तो फास्ट लेते हैं बट उनका पेस फास्ट है बट बहुत स्पॉन्टेनियस है. यू कैन नेवर प्रेडिक्ट पीपल. आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जिनको वो आज कुछ सोचा था कुछ और किया कुछ. व्हेन इट कम्स टू डिसीजन, हु इज द डिसाइसिव, आपको पता है कि वो बंदा क्या करेगा. द थर्ड वन इज रिलेटर, जिनका पेस अगर आपको देखो तो इज वेरी स्लो, रिलैक्स, काम, कंपोज. एंड थिंकर इज स्लो एंड सिस्टमैटिक. तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये 4 टाइप के लोग आपकी वेबसाइट पे, आपकी लैंडिंग पेज पे आ सकते हैं. चारों की प्रायोरिटीज इज डिफरेंट. चारों का लाइफ डिफरेंट है, उनका दिमाग डिफरेंट तरीके से वर्क करता है. सो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर देयर प्रायोरिटीज. व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर अ पर्सन हु इज अ डायरेक्टर. उनका जो गोल है दैट इज द प्रायोरिटी. अभी फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट, लेट्स से टास्क, कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो गई विच इज वेरी हाईली लॉजिकल, स्टॉक मार्केट का कुछ हो गया, तो व्हाट हैपेंस इज यू गेट लॉट ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ ऑडियंस. तो आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा. यू कैन आल्सो फिगर आउट कि आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो जिस पेज पे आने वाले जो विजिटर्स है, उसमें ज्यादा चंक किस टाइप की ऑडियंस का है. एंड देन यू नो कि फॉर व्हाट इज द प्रायोरिटी फॉर देम. गोल प्रायोरिटी है, लोग प्रायोरिटी है, रिलेशनशिप प्रायोरिटी है, टास्क प्रायोरिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट दे सीक्स. मतलब के जो डायरेक्टर होता है ही इज सीकिंग प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल. जो सोशलाइजर होता है दे आर सीकिंग पार्टिसिपेशन एंड अपलॉज. मतलब के दे डोंट केयर अगर 3-4 घंटे, दे आर जस्ट, अगर लुक पहले बंदे को मूवी पे ले गए और उसका टाइम वेस्ट हुआ, ही विल बी फ्रीक्ड आउट. दूसरे बंदे को मूवी पे नहीं ले गए बिकॉज क्योंकि वो कुछ प्रोडक्टिव कर सके, देन ही विल बी फ्रीक्ड आउट. तीसरा जो रिलेटर है, ही जस्ट वांट टू बी एक्सेप्टेड बाय पीपल. वो जो लोगों की हाँ में हाँ करते रहते हैं, उस टाइप के लोग. एंड फोर्थ इज एक्यूरेसी. मतलब कि उसको काम तो होना चाहिए बट बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ होना चाहिए. तो दिस आर 4 काइंड ऑफ पीपल एंड दैट इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर. नाउ नीचे आपने देखा स्ट्रेंथ है, ग्रोथ एरियाज है. यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन, जस्ट अ मिनट, हाँ, you can take a screenshot of this and what you guys can do, see
मेन थिंग इज व्हाट आर द फियर। बी पहले जो बंदा है उसका फियर है बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, जस्ट अपील टू द फैक्ट कि इफ यू बाय फ्रॉम अदर पर्सन दे माइट बी स्कैमिंग यू। सिर्फ वो फियर को रिकॉग्नाइज करवाना, दैट माइट वर्क ऑन योर सम ऑफ योर लैंडिंग पेजेस। सेकंड में दूसरा बंदा जो है उसके लिए लॉस ऑफ सोशल रिकॉग्निशन, कि लेट्स से कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू सेल, अगर वो बंदे ने वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी तो ही माइट बी लेफ्ट बिहाइंड। जस्ट लाइक लास्ट टाइम जब मैंने लाइव कॉल किया था, आई सजेस्टेड अ गाय कि हु इज ट्राइंग टू सेल अ 40-year-old, वो कुछ सर्विस बेचना चाहता था। दैट डूड अपील्ड टू फियर देन, एंड व्हाट हैपेंड, वो बंदे को अपना सोशल रिकॉग्निशन चला जाए वो नहीं पसंद था, तो ही इज विलिंग टू स्पेंड द मनी, और डबल मनी ही इज विलिंग टू स्पेंड नाउ। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि हाउ योर प्रोडक्ट, यू हैव टू show people that if they don't do this they might lose the social recognition. For example, what you can do, you can write your landing page इस तरीके से लिख सकते हो कि ये for you can find a story कि जिन लोगों ने अडेप्ट नहीं किया, like you can find stories like Nokia, Kodak, जिन लोगों ने टाइम के साथ इवॉल्व नहीं किया, अडेप्ट नहीं किया नई टेक्नोलॉजी, जिसको you lost it if you have some kind of technology business अगर आपका है तो। देन थर्ड पर्सन जो है, दे आर लाइक सडन चेंजेस उनको नहीं पसंद होते हैं, इंस्टेबिलिटी नहीं पसंद होती है, तो इन लोगों को आप पुश नहीं कर सकते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो पेस में जो स्लो पेस वाले हैं उनको आप उनके टाइम से दे विल बाय, दे विल नॉट बाय। अगर आप कितने भी टाइमर लगा लो दे विल वोंट बाय फ्रॉम यू। पहले दो है यू कैन पुश देम, बट सेकंड टू दे आर नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम यू। चौथे जो है थिंकर्स, दे पर्सनल क्रिटिसिज्म ऑन देयर वर्क एफर्ट्स अगर उन पे हो, दे डोंट लाइक दैट। सो आपको ये चारों जो फियर्स है, यू कैन बेसिकली ये फियर उनको फील करवा सकते हो हमने लैंडिंग पेज पे। अब किस तरीके से करना, दैट विल वेरी। इट कुड बी इन योर कॉपी, जो आप कॉपी राइटिंग करते हो उसमें हो सकता है। इट कुड बी थ्रू योर डिजाइन, वट एवर योर स्ट्रेंथ्स आर। करना ये है कि आपको मेक श्योर करना है कि उनका फियर वहां पे दिखाओ। इरिटेशंस, व्हाट दे आर इरिटेटेड अबाउट। तो फर्स्ट पर्सन इज मोर इरिटेटेड अबाउट इनएफिशिएंसी एंड इनडिसीजन, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। सेकंड इज कि इफ यू अंडरस्टैंड, ये दिस टू पीपल हु आर लाइक दे, वन इज डिसाइसिव एंड सेकंड वन इज स्पॉन्टेनियस, दे आर ऑपोजिट। बेसिकली दोनों इंसानों को एक ही सिचुएशन में डालोगे, दोनों में एग्जैक्ट ऑपोजिट चीजों का रिएक्शन होगा। तो दिस इज समथिंग यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। उसी के अलावा the most important is how they react under stress, especially because when let's say कि you are using some timer, you are using some offers, जब भी आप offers दे रहे हो लोगों को, what happens is you are using some kind of stress, you are putting stress on them, and that's how when they react through stress, वो किस तरीके से react करते हैं depends on their own personality. Measure, और ये जो second last, if you see, measure personal worth by how they measure their progress. Now, this is important because the first person result उनका जो measurement का है, let's say कि आपका audience ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो लोगों को इस they are mass, let's say they are a director, okay. What you can do on your web page, first page पे you show them before and after result of other clients, okay, that is more important. For second kind of person, just show them how other persons are supporting a person rather than getting a result. The difference is कि पहले में आप result दिखा रहे हो, second में you are showing कि a person is clap. Let's say अगर फोटो के एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट वाले में let's say एक जिम का एग्जांपल लेते हैं कि if your target audience is most of a directors, so what you can do, you can put a photo of before and after person जिसने weight loss किया. सेकेंड एग्जाम्पल में व्हाट यू कैन डू कि वहां पे कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके आसपास 4 लोग मिलके ताली बजा रहा है. व्हाट हैपेंस इज वो जो 4 लोग मिलके ताली बजा रहे हैं, दैट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. थर्ड पर्सन के लिए कंपैटिबिलिटी विद अदर्स ऑन कंपैटिबिलिटी विद अदर्स एंड डेप्थ ऑफ कंट्रीब्यूशन मैटर करता है. तो यू हैव टू शो दैट टू पीपल इन योर मार्केटिंग मैसेज. Like depth of communication contribution could be added simply अगर आप
खुद का बिजनेस है तो आप ट्राई कर ही सकते हो, इवन दूसरों के बिजनेस में यू कैन सजेस्ट देयर इज सम चैरिटेबल एंगल टू योर बिजनेस। मतलब के फॉर एग्जांपल आप ऐसा कह सकते हो कि आप जितना भी रेवेन्यू करोगे उसमें से अ सर्टेन परसेंटेज गोज फॉर गुड कॉज, एंड आई कैन बेट जितना आप डोनेट कर रहे हो उससे दुगना तो आप कमा ही लोगे, बिकॉज देयर आर पीपल लाइक दैट हु लाइक्स दैट मैसेज। एंड लास्ट वन वाज कि कितना एक्यूरेट, तो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले वालों के लिए आपने बिफोर आफ्टर दिखाया, सेकंड लास्ट जो थिंकर्स है उनके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि इसने 10 किलो लूज किया 3 महीने में किया। बी प्रिसाइज विथ योर नंबर्स। So I hope you can study everything and not only in landing pages, आप अगर किसी से पर्सनली भी मिलने जा रहे हो, now their workplace you can see, नीचे देख के you will able to understand कि उनका वर्क प्लेस जो है वहां पे देख के भी आपको आइडिया आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दे आर, एंड देन यू कैन पिच देम इन अ वे कि उनको अपील करे। फॉर एग्जांपल आप किसी के यहाँ पे गए और वर्क प्लेस में ही इज ऑलवेज बिजी, ही इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी डिसाइसिव, आपको पता है, आपने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया, देन यू नो कि देयर गोल इज देयर प्रायोरिटी, so you talk about the goal whole time. Okay, now अगर आप किसी से मिलने गए हो और वो बंदा सिर्फ जस्ट चिट चैटिंग विद अदर पर्सन, तो व्हाट यू शुड डू, जस्ट गो देयर एंड चैट फॉर हिम। कई बार तो ऐसा हो सकता है कि जस्ट गो देयर एंड बातें करो। आई विल टेल यू, रिसेंटली वी क्लोज अ डील यस्टरडे, कल जो डील हमने क्लोज करी थी, व्हाट वी हैव डन, जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया था, फॉर 90 मिनट्स वी सेट, फॉर 85 मिनट्स वो बंदी बोली है, अगले 5 मिनट मेरे साथ जो आया था उसमें से 4 मिनट वो बंदा बोला है और मैंने बोला है बाय। दैट इज व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, बिकॉज आई न्यू शी वाजंट द मोस्ट एफिशिएंट पर्सन। उस बंदी को मुझे पता था कि once I built, when she feels heard, when she feels कि I understand her, I can close the deal. In the same way, you have to understand what kind of person you are dealing with. So, and then you can close lot more sales if you want to. So if you have any questions, you can ask. That is all to share. Yeah. Especially around this topic, you can ask anything. I use it almost every day. So if there's no question, I'll quit. What if we cannot judge the person? Okay, look, what if we cannot judge the person? Number one thing is just start to make assumption. ये this is a skill, okay? ऐसा नहीं होगा कि आप पहले दिन से improve हो जाओगे. Every time it's just like a skill, just like riding a bicycle. अगर आप ने जब bicycle सीखी थी पहली बार तो नहीं हो गया था ना, but at least try on even your friends, जितने भी लोगों से दुनिया में मिल रहे हो, think about कि आसपास के लोग कितने हैं. Even one of the person in the office, मैंने उनको एक दूसरा personality system सिखाया था, and I asked them to judge every single person in the company कि वो क्या है. The more and they can directly, आप में से जिन लोगों के पास मेरा नंबर है, you can directly ask me, हमारे जो mutual person जो है, you can think about them and just share with me, and I'll share कि how accurate you are, so I can give you feedback. But just try to do it and just see कि कितना accurate है आपका, and the more you do it, the more you will be able to do better. और लॉन्ग रन में जस्ट मेक अ गोल, लेट्स से कि 1 साल के बाद अगर 10 में से 5 लोगों के पर्सनालिटी टाइप सही से जज कर पा रहे हो, द थिंग इज कि उसके बाद योर कन्वर्जन रेट इज गोइंग डबल और ट्रिपल इजीली. एंड कुछ चीजें हैं व्हिच इज वेरी विजिबल, लेट देम टॉक. अगर किसी से बात कर रहे हो, ओके, द थिंग इज अगर वो बंदा आपको नहीं बात करने दे रहा है, तो ही इज अ सोशलाइजर फॉर द मोस्ट पार्ट. कुछ चीजें तो समझ आ जाती, कोई बंदे के पास बैठे हो वो नहीं बोल रहा है, ही इज ऑलवेज थिंकिंग, देन ही इज सिस्टमैटिक, ही इज थिंकर. So lot of cues are there, you have to study a bit, practice a bit, but yeah, आ जाएगा. Is there any more questions? I hope you guys got the understanding. Ultimately, landing page conversion is all about understanding who your customer is on a deeper level. When to cognitive psychology, you have to understand how their brain works.
once you are able to know कि उनका दिमाग कैसे काम करता है, it's just a matter कि look, ultimately if you think about conversions, it's simple. It's getting into the right people at right time with right message. That's it. किसी बंदे को ही इज रेडी टू बाय, उसको जो चाहिए एग्जैक्टली जिस मोमेंट में चाहिए, जब चाहिए, अगर आप उसको वो प्रोवाइड कर सको, देन द कन्वर्जन इज हाई. द प्रॉब्लम इज हम ये नहीं कर सकते. So that is why we need to learn this kind of systems, and then we try to predict it. So I hope you guys got some value. To be honest, I am not happy that much in terms of what I shared, but I am sure कि इसमें से दो चीजें भी अप्लाई करोगे, you guys can get a lot of better results. So yeah, I am just closing now. So yeah, there's a couple of chats I want to see. Yeah. Okay, I hope you guys get some value. If there is any doubt, please share with me, because look, what I am planning to do, not sure when, keep landing page pe I'm trying to create a recorded thing which I can share with my team in future. Like, so I will share with you for sure. The only thing I need from you guys is just a feedback कि मुझे किस तरीके से improve कर सकता हूँ मैं, where people can understand it better and more faster, and what kind of example should I take. So please give me feedback. You can directly send me a message, or I'll just keep the chat open for a minute and then I'll close the session. But share what feedback you have for me, so I जब भी मैं recording इसका करूँ, so I can keep that in mind and I can improve.